So this is paper 3, variant 1, May, June 2021. All right. So we can have a look at the instructions first. Just keep in mind a few things. You have to make sure you show all working in your answers, and in your working you should be showing. So I say this every single day. This is very important. Otherwise, आप फजूल remarks use कर रहे होंगे. Your working should all be at least 4 significant figures. इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम बिल्कुल नहीं करना आपने. At least 4 significant figures. That's what your working should be. ठीक है? Okay. Let's begin with the first question here. So this is a modulus inequality. We've got a standard method for that. हम क्या करते थे इसके अंदर? We will treat this as an equation. Let's say this is 2 into 3x minus 1 equals x plus 1. So we treat this as an equation, and then we remove the modulus sign. How are we going to remove them? We're going to put plus minus on any one of the two sides. दोनों sides में से किसी भी एक side पे plus minus लगा दें. So what I can do is I can say 2 into 3x minus 1, that equals plus minus x plus 1. That gives me two equations. I have 6x minus 2, that equals x plus 1. And I have 6x minus 2 equals minus into x plus 1. In दोनों equation को solve कर लेते हैं. We have 5x equals 3 and x equals 3 over 5. And from the other equation, we have 6x minus 2 equals minus x minus 1. That becomes 7x equals 1. And x equals 1 over 7. Now, these are not your final results, but we've got two cutoff values that we can use now in our answer. ये आपके critical points आ गए. अब हम क्या करेंगे? We will make a number line. We'll make a number line that looks like this. And we will mark these 2 points on that number line. अब इसमें से छोटा point कौन सा है? If you're confused, you can convert it to decimals on a calculator. 1 over 7 is smaller. ये हम left पे लिख लेते हैं यहाँ पे. This is 1 over 7. 3 over 5 is bigger. We write that here. ये आपके पास दो cutoff points are. ठीक है? Now what you've got to do is you've got to choose numbers in the 3 regions that you've got now. एक region इधर दरमियान में आ रहा है, एक region 1 over 7 के left पे है, एक region 3 over 5 के right के ऊपर है. These are 3 regions that you've got. आप क्या करेंगे? इन तीनों regions के अंदर एक नंबर ट्राई कर लेंगे और आप चेक कर लेंगे कौन से रीजन सेटिस्फाई करते हैं. अच्छा, अब जब आपके पास दोनों साइड्स पे मॉडुलस होता है ना, दोनों साइड्स पे मॉडुलस, उसमें आपको पता है कि सिर्फ 2 ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. जब दोनों साइड से मॉडुलस आ जाए ना इनइक्वालिटी के अंदर, या तो आपका ये केस होता है कि साइड्स वाले सेटिस्फाई करते हैं, दरमियान वाला नहीं करता, या फिर आपका ये केस होता है दरमियान वाला सेटिस्फाई करता है, साइड वाले नहीं करते. These are the only 2 possible cases when you've got modulus on both sides. अगर एक साइड में मॉडुलस हो, फिर तो आपको फिर कोई भी हो सकता है, फिर कोई भी वेरिएशन हो सकती है, आपको सारे रीजन चेक करने पड़ते हैं. लेकिन अगर दोनों साइड से मॉडुलस आ जाए, you can actually save your time by just choosing a number in the middle वाला नंबर अगर सही आ जाए तो आपको पता है कि वो ये वाला केस हो जाएगा. अगर मिडिल वाला नंबर सेटिस्फाई नहीं करता तो वो ये पहला वाला केस हो जाएगा. ठीक है? You can still check all the regions if you want, लेकिन इसमें दरमियान में region check करना is generally enough. In fact, it's always enough. It's sufficient. अच्छा, let's take some numbers. 1 over 7 से less कोई number देख लेते हैं. Let's take 0. 1 over 7 और 3 over 5 के दरमियान में हम क्या number लेंगे? Again, if you're confused, you can convert this to decimals. 1 over 7 में आपको calculator से बता देता हूँ क्या value आती है. This is 0.142. 3 over 5 is 0.6. इन दोनों के दरमियान में कोई नंबर ले लें. ठीक है? So I can take 0.5. That lies in the middle. So let's take 0.5 in the middle. ठीक है? एक नंबर right side पे ले लें. I can take 1 on the right side. ये 3 numbers मैंने check कर लेने हैं. Now I'll do it the shorter way first. दरमियान वाला number check कर लेता हूँ मैं सिर्फ. 0.5. Let me write that inequality here first. किस में check करना है? Inequality में जाके input करना है. 2 into modulus of 3x minus 1. That is less than modulus of x plus 1. ठीक है? उस inequality में जाके input कर दें 0.5. अच्छा, what do we get when we input 0.5? We have 2 into modulus of 0.5 minus 1 less than 0.5 plus 1 का modulus. Now, what do we get in the left side? We've got 2 into modulus of 1.5 minus 1, which is 0.5 less than 1.5. Now that gives us 1 less than 1.5, which is correct. That means this middle region should be correct. अब हमें पता है कि अगर इस वाले केस के अंदर जब दोनों साइड मॉडुलस होता है,
अगर दरमियान वाला रीजन ठीक है तो साइड्स वाले रीजन इनकरेक्ट ही होने चाहिए. If you want, you can check them as well, just to be sure. If you forget this thing कि वो गलत ही होंगे, आप चेक कर लें, देख लें क्या आता है. 0 इनपुट करके देख लेते हैं. 2 into 0 minus 1, that's less than modulus of 0 plus 1. That gives us 2 into modulus of minus 1, that's less than 1. And that's 2 less than 1, which is incorrect. So this region is incorrect on the left side. 1 check kar le. 2 into modulus of 3 minus 1, that's less than modulus of 1 plus 1. This gives me 2 times 2 on the left side, that's 4. 4 less than 2, that's also incorrect. So the region in the middle is correct. I'm going to write down my answer now, the final answer. 1 over 7 or 3 over 5 ke darmiyan wala region, that's going to be 1 over 7 less than x less than 3 over 5. So x is between these two values. यहाँ पे equality sign हम नहीं डालेंगे क्योंकि original inequality के अंदर equality signs नहीं है. अगर वहाँ पे equality signs लगे होते हम यहाँ पे भी equality signs डाल सकते थे, हमें डालना था पर ठीक है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे. This is your final result in the first question. ठीक है, so that was simple modulus inequalities. इसका standard तरीका होता है, you can do this on every single type of modulus inequality. Let's move on. Question number 2. Okay, so we've got this equation. We need to find the real root of this equation. This is y equals, this is just 2 e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2 plus e raised to power x equals 3. इस equation को solve करना है, इसका real root निकालना है, giving our answer correct to 3 decimal places. And then it says, your working should show clearly that the equation has only one real root. तो आपने show करना है कि और कोई root इसका नहीं आता. अगर कोई आता है तो उसको ignore करना है, उसकी reason बतानी है कि क्यों ignore करना है. ठीक है? अच्छा, let's actually solve this equation and see what we get from this. We've got 2 e raised to power x plus e raised to power minus x. What we can do is we can multiply this denominator on the other side, and that's going to give us 3 into 2 plus e raised to power x. Now, how do we solve equations like these जहाँ पे किसी constant की कोई power आ रही है ऊपर? हम इसको substitution से कर सकते हैं. First of all, we can write it like this: 2 e raised to power x plus 1 over e raised to power x, and then 6 plus 3 e raised to power x. ठीक है? अब e raised to power x आ रहा है, same number की power आ रही है x different जगहों पे. हम यहाँ पे substitution use कर लेंगे. We'll say let another letter, any other letter, let's say m, that equals e raised to power x. And now we've got an equation that looks like this: 2m plus 1 over m equals 6 plus 3m. And now you can solve this equation. I multiply with m. इस m से multiply कर देते हैं. In fact, let's just simplify this first. ये 2m है, ये 3m है. मैं 2m को उस side पे ले जाता हूँ. That gives me 1 over m equals 6 plus m. And now I multiply with m. That gives me 1 equals 6m plus m square. So I've got a quadratic equation that's m square plus 6m minus 1 equals 0. Now, can we factorize this? We can't factorize this. इसके factorization possible नहीं है. तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको solve करना पड़ेगा. This is paper 3. This is paper 3. You could get away by just writing down the final results from your calculator, but I would still encourage you कि quadratic formula में values डाल दें. It doesn't take a lot of time. 10 seconds लगते हैं. बस values डाल दें फिर answer लिख दें. So minus 6 plus minus square root of 6 squared minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1. ठीक है, इसके बाद आप आंसर लिखते हैं अपना. अच्छा, उसने कुछ कहा है आपको ऊपर 3 decimal places, तो we don't need exact numbers, तो हमें decimal places में ही देना है. तो हम इसकी values निकाल लेते हैं calculator से. See what this turns out to be. Can somebody give me these two numbers? ये क्या आते हैं? One, 6 minus 1. Okay, so I'm getting 0.1623, and the other value is turning out to be minus 6.1623.
1623. ओके, सो टेक हायर एक्यूरेसी ताकि आपके आंसर पे आगे सही आए। ओके, अभी आपके पास m की वैल्यूज आ गई। अब क्या करें, अब वापस सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपको चाहिए था e⁻x का, वो वापस सब्स्टिट्यूशन डाल दें यहाँ पे। उसे e⁻x इक्वल्स 0.1623 और e⁻x इक्वल्स -6.1623. नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, द अदर वन। किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप जो मर्जी कर दें, नेगेटिव तो कभी नहीं आ सकता आपके पास, राइट? नेगेटिव तो नहीं आ सकता आंसर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, दोनों साइड्स का अगर आप लॉग ले लेंगे, क्या होएगा? लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा and your calculator is going to give you an error. So this is not possible, right? So what you've got in the right side, that's not possible. इसको आप कहेंगे this gives you no results. ठीक है, ये error आ जाएगा। अच्छा, let's look at the other one now. इसको कैसे x की value find करें? We can take log on both sides. ln e⁻x equals ln of 0.1623, and that gives me x equals ln of 0.1623. We can see what that turns out to be. ln of 0.1623, that's -1.818. अच्छा, उसने आपको कहा है आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक अपना आंसर देना है। इट्स नेसेसरी टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, यू कांट इग्नोर दैट। क्वेश्चन के अंदर जब इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आपको एग्जैक्टली उसको फॉलो करना है। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है -1.818, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे, फिर आपको मार्क मिलेगा इसका, अदरवाइज आपका आंसर का मार्क कट जाएगा। इफ यू राइट 2 डेसिमल प्लेसेस, यू लूज अ मार्क। इफ यू राइट 4 decimal places, you'll lose a mark. So it has to be exactly 3 decimal places. ठीक है? Okay. अच्छा, let me look at some questions here. फजेन लॉग्स यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। मसला लॉग्स में ये होगा, मतलब शुरू में अगर आप लॉग अप्लाई कर दो तो इसका मसला ये होगा, you've got plus minus here, right? So if you apply log here, you will end up having log, क्योंकि log इंडिविजुअल टर्म्स पे तो नहीं अप्लाई कर सकते ना, लॉग आपने पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करना होता है, पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई करना होता है। ऑन द लेफ्ट साइड you'll get 2 e⁻x plus e⁻−x. Similarly on the right side you'll have ln of 3 into 2 plus e⁻x. अब जब प्लस आ जाता है लॉग के अंदर, वी कांट, देयर इज नो वे टू सिंपलीफाई दैट, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो इस जब प्लस माइनस आ जाए दरम्यान में, उस पर डायरेक्टली लॉग लगाने का फायदा नहीं होता, राइट? सो दैट, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. So this doesn't work. No, it's not -0.4905. Are you saying ln of 0.1623 is giving you that? There might be some problem in what you're inputting. Okay, all right. Let's move on. Just try that again. That should work. Again, you should check if your calculator is original. That sometimes, so it actually happened in a class that I was teaching in the morning. किसी कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो गलत आंसर आया था रिपीटेडली, वह इनपुट दैट सेम थिंग ऑन द अदर कैलकुलेटर, सेम वर्जन, मतलब क्लास विज थे दोनों, एक पे वो डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था, एक पे डिफरेंट रिजल्ट दे रहा था. सो देयर समटाइम्स कैन बी अ प्रॉब्लम विद द कैलकुलेटर एज वेल, बट या यू माइट बी इनपुटिंग the wrong value. Yeah, okay, so that's the value of x equals -1.818. That's question number 2. Let's move on to question number 3 now. Cos of x minus 30 is equal to 2 sine of x plus 30. We have to show that tan of x equals this. Acha, now let's think about this. On the left side, ये जो आपको equation दी हुई है, इसमें you've got compound angles, right? x minus 30, x plus 30. On the right side here, एक तो sine और cos की जगह पे tan आ गया, और कंपाउंड एंगल खत्म हो गया, यू गॉट सिंगल एंगल्स, राइट? यू गॉट सिंगल एंगल्स. तो आप क्या करें, कंपाउंड एंगल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल एंगल्स के अंदर. सो यू गॉट द आइडेंटिटीज फॉर दैट, you just use them. What I'm going to do is I'm just going to अच्छा, अब फॉर्मूला शीट में आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ साइड पे फॉर्मूलाज लिख देता हूँ. दिस इज द trigonometric identities that you will have there. ये आपको एक ये यूज करनी है, एक ये यूज करनी है, ठीक है?
I'm going to go back there and write down those identities here on the sides. एक हमें चाहिए sin of a plus b. Sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. That's one identity that we need. The other one that we need is cos of a minus b. Cos के अंदर sin change हो जाता है. It should have been cos a cos b plus sin a sin b. ठीक है, ये आपकी दो आइडेंटिटीज है, इनमें सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी. Okay, let's try this. Cos of x into cos of 30, ये आपकी इसकी एक्सपेंशन हो रही है, plus sin of x into sin of 30. That's what we got in the left side here. ठीक है, right side को expand कर दे, 2 common ले लें बाहर. Sin of x plus 30, what's that? That's sin x into sin 30 plus cos x into cos of 30. This is what we've got. ठीक है, अब ये sin 30 cos 30 की आपने exact values लिखनी है. Look at this here. You've got these numbers in square root form. आपने decimals में नहीं convert करना है इसको decimals में नहीं convert करना. Now you don't have to memorize these values necessarily. ये calculator में आपको मिल जाएंगी. Cos 30 की value आप calculator में evaluate करोगे. You should be getting square root of 3 over 2 from that. Just evaluate it from your calculator. If your calculator is not giving you an exact answer for this, सिर्फ decimal दे रहा है, make sure that you change your calculator. ठीक है, calculator ऐसा रखें जो आपको exact values दे देता है, otherwise आपको exam में मसला होगा. अच्छा, so ये आपके पास cos 30 square root of 3 over 2 sin x. Yes, sorry about that. So this should have been, yes, I applied this wrong here. That's correct. This should have been sin x cos 30. That was supposed to be sin there. Sin x cos 30 and cos x sin 30. Yeah, thank you for that correction. That should have been this. Sin x cos 30 and cos x sin 30. ठीक है, अच्छा. Now, what do we have on the right side? You've got 2 into sin x into cos 30. Cos 30 is square root of 3 over 2 plus cos x into 1 over 2. That's sin 30. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. Now let's simplify this. Sin x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं, cos x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाएं. Why am I saying that? Because आपको tan चाहिए ना, तो फिर हम sin और cos को डिवाइड कर देंगे तो tan मिल जाएगा वहां से हमें, right? So हम क्या करते हैं, sin वाली टर्म्स को एक साइड पर रख लेते हैं. Let's say 1 over 2 sin x. We've got this from here. दूसरे साइड से हमारे पास आ रहा है, ये 2 है, ये 2 है. Sorry, वो cancel. Yeah, we can actually cancel this out. पहले इसको simplify कर लेते हैं एक step, just so you don't get confused. एक step मैं और show कर देता हूँ. You've got square root of 3 over 2 cos x plus 1 over 2 sin x. ये मेरे पास left side पे आ गया. Right side पे multiply अगर कर दें, 2 into square root of 3 over 2, that gives you square root of 3 into sin x, and then again this 2 and this 2, that gives you 1, and you're left with cos of x. Sin x वाली terms को एक side पे ले जाएं. You get 1 over 2 minus square root of 3. मैंने common ले लिया sin x इन दोनों में से. I get this on the left side. Right side पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका coefficient 1 है, so 1 minus square root of 3 over 2 times cos x. So I've just taken the sin x terms on one side, cos x terms on the other side. This is what I have now. What I can do now is I can divide this cos on this side. यहाँ पे आके divide कर सकता हूँ, और ये जो number है पूरा इसको right side पे लेकर जा सकता हूँ. ठीक है. Now before we actually do this, you might find it easier to take LCM on both sides first. उसका फायदा ये होगा, जब आप multiply करोगे दूसरी side के ऊपर तो वो cross multiplication आसान हो जाएगी थोड़ी सी. So what I'm going to do is I'm going to take the LCM for these numbers first. 1 minus 2 square root of 3 over 2 हो जाएगा ये, and then that equals sin x. On the other side I have 2 minus square root of 3 over 2 into cos x. And now in fact we can just cancel out the 2's. ये 2 और 2 तो वैसे ही cancel हो गए आपके. अब मैं sin x को cos x को जाके left side पे divide कर देता हूँ. That gives me sin x over cos x. On the right side, I have 2 minus square root of 3 divided by 1 minus 2 square root of 3.
Now the left side becomes tan x. On the right side, I've got what I needed there. 2 minus square root of 3, 1 minus 2 square root of 3. यही मुझे चाहिए था ऊपर. Right? That's what we needed to prove. अच्छा, इसमें कभी कभी इस तरह से होता है कि कुछ लोग इसको डिफरेंट तरीके से करते हैं, मतलब डिफरेंट टर्म्स को डिफरेंट साइड पे एक साइड पे लेकर जाते हैं. They end up with something like this. Square root of 3 minus 2 over 2 square root of 3 minus 1. उनके पास ये आ जाता है एंड पे. क्या है? आपकी टर्म्स रिवर्स हो गई हैं. ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 2 है, नीचे 2 square root of 3 minus 1 है. These are actually equivalent. ये एक दूसरे के equivalent है. आप इसके next step में इसको इसमें convert कर सकते हैं directly. How would you do that? You could actually do it like this. Since it's a fraction, आप दोनों numerator और denominator को multiply कर दो -1 के साथ. Right? -1 over -1 से multiply कर दो. जब numerator -1 से multiply होगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 2 minus square root of 3. डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 1 minus 2 square root of 3, और आपका वो प्रूव हो जाएगा जो आपने कहा, जो आपको करना था. ठीक है. सो इफ यू गॉट द अदर वे अराउंड दीस टर्म्स, उनको आप इस तरह से फ्लिप कर सकते हो. ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. खिज़र, sin 45 और cos 45 की सही वैल्यूज आती हैं कैलकुलेटर के अंदर, उसमें मसला नहीं है. कैलकुलेटर आपको इस फॉर्म में देता है. कैलकुलेटर आपको देता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 over 2, एंड दैट इज करेक्ट. Another way to write the same thing is 1 over square root of 2. ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. कैलकुलेटर आपको ये देता है, आप शायद इसको रेफर कर रहे हो कि ये होना चाहिए. दे आर द सेम थिंग, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. ओके, कैलकुलेटर्स कौन से अलाउड हैं? बस ग्राफ्स नहीं बन सकते उसमें, और इंटीग्रेशन जो है वो एक्स के टर्म्स में नहीं होनी चाहिए, एंड देन इट्स अलाउड. क्लास विज आई वुड रिकमेंड आप वो ले लें, उसमें ज्यादातर फंक्शंस आपको चाहिए होते हैं, उसके अंदर होते हैं. And that's the most advanced calculator within the allowed limits that you've got for Cambridge. Acha, let's move on. Now it says, hence solve this equation. Cos of x minus 30 equals 2 into x plus 30. It's exactly the same equation as before, but now we have already converted it to this form. ये हमने इस form में convert कर लिया हुआ है इसको. That's why it's only 2 marks, because आपको कुछ भी नहीं करना है. उसके बाद tan x equals 2 minus square root of 3 divided by 1 minus 2 square root of 3. Now you're not really asked for an exact answer है, आप exact निकाल भी नहीं सकते. आप क्या करोगे? इसको decimals में convert कर दो. Right side को decimals में convert कर दो. You can see what that turns out to be. 2 minus square root of 3 divided by 1 minus 2 square root of 3. And that gives me minus 0.10874. That's what I'm getting. ठीक है. tan negative आ रहा है. अच्छा, again, there's another function that you definitely should have in a calculator. It makes your life so much easier. ये fraction वाला बटन आपके कैलकुलेटर में जरूर आना चाहिए. अगर ये नहीं है, again, get a calculator that has this function. ठीक है. It makes your calculations much easier and less error prone. आपके careless errors काफी कम हो जाते हैं. अच्छा, अब क्या करेंगे? बेसिक एंगल फाइंड कर लेंगे. बेसिक एंगल के लिए क्या करते हैं? tan अल्फा राइट साइड को पॉजिटिव करते हैं, 0.10874. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, tan इनवर्स ले लें उस वैल्यू का. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज हियर. कैलकुलेटर आपका सही मोड में होना चाहिए. पेपर 3 के अंदर, लेट मी रिमाइंड यू, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स सिर्फ इन दोनों में डिग्रीज यूज होगा. इसके अलावा कहीं पर डिग्रीज यूज नहीं होगा. इसके अलावा हमेशा रेडियन हुआ करेगा. ट्रिग्नोमेट्री में दोनों हो सकते हैं और वेक्टर्स में भी दोनों हो सकते हैं. बाकी हर टॉपिक में सिर्फ रेडियन होएगा. Acha, let me take tan inverse of this thing. I get 6.21 degrees. This is the basic angle. ठीक है, ये basic angle आ गया. अब हम देखते हैं quadrants से. Which quadrants can we be in? Tan कौन से quadrants में negative होता है? You see, tan is negative. ASTC, so you know, first में positive है, second में negative है, और फिर fourth में negative है. We can be in any one of these two quadrants. ये आपके alphas हैं. आपको 0 और 360 के दरम्यान में आंसर्स लिखने हैं. सेकंड क्वाड्रेंट वाला क्या हो जाएगा? इन द सेकंड क्वाड्रेंट you'll have 180 minus alpha, which is 6.21. And the fourth quadrant you'll have 360 minus alpha, and that's 6.21. And that's going to give you the result. ठीक है, देख लें क्या आता है आपके पास. 173.8 from this, and the other one should be 353.8. These are your two results for this equation. ये आपके दो solutions. ठीक है. Any questions on this?
All right, let's move on. So that was pretty straightforward. 2 marks, simple trigonometric equation. Acha, dobara trigonometry aa gayi. Now we've got to prove that 1 minus cos 2 theta equals 1 plus cos 2 theta. So what I'm going to do is I'm just going to copy that page from the formula sheet here. आपको trigonometry करते हुए हमेशा formula sheet अपने सामने रखनी है, ठीक है? Even if you think you remember everything, आपने फिर भी ये सामने रखनी है अपने, otherwise careless errors हो जाते हैं, ठीक है? So this is the formula sheet that I have. ये trigonometry वाला पेज है, differentiation भी इस पेज पे होता है. अच्छा, so we need to prove this thing. अब देखिए जिस साइड के ऊपर डबल एंगल या कंपाउंड एंगल आ रहे होते हैं हम हमेशा उस साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वो हमारा एक थंब रूल था कि ये वो साइड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट पे डबल एंगल है, राइट साइड पे सिंगल एंगल है. लेट्स एक्सपैंड दिस थिंग. 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आपके पास है. रिमेंबर आपको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? फाइनल रिजल्ट आपको चाहिए tan की फॉर्म के अंदर. तो ये साइन ओवर कॉस कहीं पे शायद कुछ हो रहा होगा इवेंचुअली, वो हमें किसी तरह से करना है. अच्छा, 1 माइनस cos 2 थीटा. अब cos 2 थीटा के हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. cos 2a की कौन कौन सी आइडेंटिटीज है? वी गॉट दीज 3 आइडेंटिटीज, ठीक है? तो हमने देखना है इसमें से हम कौन सी यूज करें उसके अंदर. we could potentially use any one of the 3. बस ये होता है कि किसी में एक दो स्टेप जल्दी आपका रिजल्ट आ जाता है, किसी में एक दो स्टेप ज्यादा लग जाते हैं. Now, one way to think about this could have been कि आप ये सोचें कि न्यूमरेटर में आपको साइन चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें tan चाहिए eventually, right? So that could be a good starting point. Hopefully that will work. Sometimes you'll have to change it after that. वो भी सही है, कोई मसला नहीं है. Let's see if it works or not. हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में साइन वाली फॉर्म लिख देते हैं. cos 2 थीटा में हम साइन वाली फॉर्म अगर लगा दें, that's 1 minus 2 sin square theta. अच्छा, 1 minus 2 sin square theta. डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, इसमें कॉस वाली फॉर्म लगा देते हैं अगेन बाय, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में साइन चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, ताकि वो tan में कन्वर्ट हो, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में हम cos 2 थीटा का वो वाली फॉर्म लिख देते हैं जिसमें सिर्फ cos आ रहा है. That's 2 cos square a minus 1. So in this case it's going to be 2 cos square theta minus 1. This is what I have on the left hand side. ठीक है, let's simplify this. अब इसका फायदा क्या होगा? 1 और 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया डायरेक्टली. डिनोमिनेटर में भी यही हुआ, 1 plus 2 cos square theta minus 1. 1 और 1 कैंसिल हो गए. You're left with 2 sin square theta over 2 cos square theta. 2 and 2 get cancelled, and sin square over cos square gives you tan square theta. And that's what we wanted to prove. ये आपने prove कर दिया. Now, it does not matter if you start it using another form of this cos 2 theta वाली identity. आप इस तरह से अगर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अब ये लगा देते हैं cos square minus sin square, that is okay. आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते थे, cos square को sin में कन्वर्ट कर देते, इसको आप 1 minus sin square कर देते. So even if you start another way, एक दो स्टेप ज्यादा लगेंगे, but eventually you can prove that. ठीक है? So this is how you could prove this identity. Again, it was pretty straightforward. That's why it's only 2 marks. That's a bit too low, a bit too less actually, but still it's not that difficult. So that's what you do here. Any problems with this? That's the proof. Fazan, this is what you've got in the last part. Last question में ये किया था हमने. Okay, अच्छा. So 4 part A हो गया. Let's move on to part B now. It says, hence find the exact value of this integral. Hence, that means you've got to use the previous part. अब यहाँ पे क्या? It's exactly the same thing. 1 minus cos 2 theta over 1 plus cos 2 theta. उसको हमने prove कर दिया कि that's equivalent to tan square theta. उसको use कर लेंगे हम यहाँ पे. We'll say this is integral of tan square theta with respect to theta, and the limits are from pi over 6 to pi over 3. Now, how do we integrate this thing? Tan square ka integral. Now, let me actually go to the formula sheet.
हमारे पास क्या इसका इंटीग्रल होता है? तो हमें तो tan का इंटीग्रल भी नहीं दिया होता। कैन यू सी tan एनीवेयर हियर? tan का इंटीग्रल भी नहीं पता हमें, तो tan स्क्वायर कैसे आएगा? व्हाट कैन वी डू हियर? यस, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। tan का तो नहीं है, लेकिन secant स्क्वायर का दिया हुआ है। secant स्क्वायर का tan होता है। अब tan स्क्वायर और secant स्क्वायर को हाउ डू वी कनेक्ट दैट? रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 plus tan square theta equals secant square theta. So we can use that. We can say ये जो tan square theta है यहाँ पे, since we know the identity is 1 plus tan square theta identical to secant square theta, tan square theta क्या हो जाएगा? That will become 1 minus or secant square theta minus 1. हमने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। And now this is a very simple integral. आपको पता है कि secant square का इंटीग्रल क्या होता है? Since there's a minus sign in the middle, आप दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर लोगे। Secant square का इंटीग्रल is going to be tan. So you get tan as the integral of secant square. What about the integral of 1? 1 का इंटीग्रल आपके पास देखें, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? It's theta. x नहीं लिख देना आपने वहां पे, x नहीं लिख देना, आप यहाँ पे लिखोगे थीटा, बिकॉज द वेरिएबल इज थीटा। 1 का जब इंटीग्रेट करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ओके, हुज़ैफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विल नॉट हेल्प अगर आप इसको ब्रेक करते हो tan थीटा इनटू tan थीटा में। अब उसके बाद क्या करें? किसको u लें, किसको dv over dx लें? द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द इंटीग्रल ऑफ tan। tan का इंटीग्रल नहीं पता हमें। अगर कर भी लेंगे साइन ओवर कॉस करके, तो वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। आपकी इंटीग्रेशन दोबारा से इंटीग्रेशन पार्ट्स लगानी पड़ेगी, आपको बार बार इंटीग्रेशन पार्ट्स लगानी पड़ेगी, उसका फायदा नहीं है, राइट? वो आपका सिंप्लीफाई नहीं हो रहा होगा, उसका फायदा वो आपसे इंटीग्रेट फिर नहीं होगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वुड डू इट। ये आपके पास इंटीग्रल आ गया tan थीटा माइनस थीटा, एंड नाउ यू इनपुट द लिमिट्स फ्रॉम पाई ओवर 6 टू पाई ओवर 3। ठीक है, एक दफा पाई ओवर 3 डाल दें। नाउ इट्स नेसेसरी टू इनपुट दीज लिमिट्स, यू हैव टू इनपुट दीज लिमिट्स। ठीक है, आपने दिखानी है इनपुट करके, सिर्फ कैलकुलेटर में नहीं डालनी। सब्स्टिट्यूशन का एक मार्क होता है इसमें। ठीक है, सो लेट्स इनपुट पाई ओवर 3, tan of pi over 3 minus pi over 3, and then subtract from that the pi over 6 wala case. That's going to be tan pi over 6 minus pi over 6. And now you can evaluate this from your calculator directly if you want. Remember, angle is in radians here. तो कैलकुलेटर मोड आपका सही होना चाहिए, रेडियंस में रखना है अपना कैलकुलेटर मोड। ठीक है, लेट्स इवैल्यूएट दिस। कैलकुलेटर मोड पहले चेंज कर लें रेडियंस में। tan of pi over 3, that gives me square root of 3 minus pi over 3, and then tan of pi over 6, that is going to be square root of 3 over 3. जिन लोगों ने याद की होती हैं, आपको ये शायद वैल्यू याद हो, 1 over square root of 3, that's the same thing, एक ही बात है, minus pi over 6, that's what we have. अच्छा, उसने क्या कहा था? उसने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो डेसिमल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता इसको, पाई की टर्म्स में, स्क्वायर रूट की टर्म्स में आंसर होएगा। ठीक है, let's simplify this. What do we get? We get square root of 3 minus pi over 3 minus square root of 3 over 3 plus pi over 6. ठीक है, and then you can write down the exact value for that. Square root of 3 minus square root of 3 over 3, ये क्या हो जाएगा? Again, just do it on your calculator. That gives you 2 square root of 3 over 3. ठीक है, मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया इस चीज को। आई एम गेटिंग 2 square root of 3 over 3. Okay, and then I've got pi over 6 minus pi over 3. That gives me minus pi over 6. That's going to be minus pi over 6. That's supposed to be your final result. ठीक है, ये आपके एग्जैक्ट फॉर्म में फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, let's move on
to the next question now. So this is the complete solution for this. Question number 4, part B. Okay, now we've got complex numbers. Shuru mein aage, let's have a look at this. Just have a look at the comments. Okay, ठीक है. Okay, solve the equation z² minus 2 pi iota z minus q equals 0. P और Q की values निकाल दी आपने. How is that possible? How can you find the values of P and Q from one single equation? कैसे कर सकते हैं? लेकिन वेरिएबल आपका यहाँ पे z है. z की वैल्यू आपने जब सॉल्व करने का कहा है उसने, सॉल्व का मतलब होता है आपने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी. ठीक है. नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. z² है, फिर ये z वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है. इट्स दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म ax² plus bx plus c equals 0, राइट? तो आपने क्या करना है, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें इसके ऊपर. सो यू गॉट z equals minus b. आप यहाँ पे लिख लेते हैं जस्ट सो यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. a, b और c की वैल्यूज लिख लें अलग से. पहले a is supposed to be 1, z² का कोएफिशिएंट 1 है. b is supposed to be minus 2p iota, that's the coefficient of z, and then the constant is minus q. Okay, quadratic formula apply kar de. Minus b, so that's going to be minus into minus 2p iota plus minus square root of b², that's going to be minus 2p iota ka whole square, minus 4 into a, that's 1, into c, that's minus q, whole divided by 2 times 1. This is what you get. ठीक है. अब इसको कैलकुलेटर पे ऑफ कोर्स नहीं हम डाल सकते, तो इसको हमें खुद से करना पड़ेगा. माइनस इंटू माइनस 2p iota, that becomes 2p iota plus minus square root of minus 2p iota का whole square. What is that going to be? Minus 2 का whole square, that's 4. p का square is p², iota का square is iota square. Minus 4 into minus q, that's plus 4q. That's what we have in the denominator. We have 2. ठीक है. Now we've got to simplify this. इसको as it is नहीं छोड़ सकते. अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, राइट? अगर स्क्वायर रूट के अंदर हम 4 कॉमन ले लें, that gives us, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर इवैल्यूएट करना पड़ेगा. आयोटा स्क्वायर -1 होता है, so it becomes minus 4p² plus 4q divided by 2. ठीक है. आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उसको. And now what we can do is, inside the square root, we can take 4 as common, and we're left with minus p² plus q divided by 2. Now square root of 4 is 2. उस 2 को हम बाहर लेकर आ सकते हैं. It becomes 2p iota plus minus 2 outside, and inside I've got minus p² plus q divided by 2. अब ये 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे. किस तरह से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, and this is going to give me p iota plus minus 2 खत्म हो चुका होगा, plus minus square root of minus p², or you can say q minus p². That's your final result here. This is the solution of this equation. All right. अच्छा, z को अगर आप यहाँ पे वो करते हो, फजन अगर आप वो कर लेते हो, अगर आप इसको x plus iota y कंसिडर कर लेते हो, उसका मसला ये है कि there are too many unknowns. There's p there, there's q there. उससे हो जाएगा eventually, but it's going to be a bit more complicated. In fact, quite complicated. So बहुत सारी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, उसमें इतने सारे अननोन्स आ रहे होंगे, आपको उनको सबको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. लेकिन इवेंचुअली आपको क्या चाहिए होगा, x और y p और q की टर्म्स में आपने निकालने होंगे. So you can do that using that as well, but it's going to be very complicated. ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, and that gives you the result. ठीक है. ये इसका सोल्यूशन है पार्ट ए का. Let's look at the second part. Now it says, in an Argand diagram with origin O, the roots of this equation are represented by the distinct points A and B. अच्छा, so हमारे पास roots उसके ऊपर क्या आ रहे हैं? So let me just write those down here.
एक को हम a कह देते हैं, let's call one of them a, that was p iota plus square root of q minus p square, ये एक रूट था। दूसरे रूट को हम b कह देते हैं, that's p iota minus q minus p square का स्क्वायर रूट। ठीक है, these are a and b, these are the points a and b। अब उसने क्या कहा है, given that a and b lie on the imaginary axis on the argand diagram, they lie on the imaginary axis, the vertical axis, right? Find a relation between p and q. Okay, now how does that help? उसने कहा imaginary axis पे lie करते हैं, इसका मतलब ये होगा, let me just draw that argand diagram here, ये आपके argand diagram है, real and imaginary, वो इस एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। हो सकता है a जो है यहाँ पे ऊपर है, b यहाँ पे हो सकता है नीचे हो, but wherever they are, ये आपके पास इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ही लाई कर सकते। ठीक है, now how do we find a relationship between p and q from this information? अब देखें, अगर a और b इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट इन नंबर्स का कोई होना ही नहीं चाहिए, रियल पार्ट होना नहीं चाहिए। मतलब आपके पास देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना दोनों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा, है ना? तो आप ये कह रहे हो कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, यानी आयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, रियल वाली टर्म हो नहीं सकती, बिकॉज अदरवाइज वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो आपको सिर्फ आयोटा वाली टर्म चाहिए, आपको रियल वाली टर्म नहीं चाहिए इसके अंदर। नाउ if you look at these points, if you look at these points, let me just write them together now. दोनों को हमने a और b लिख दिया, इसको इकट्ठे अगर कंसीडर करें, आप देखें इसमें अभी आपको क्या लग रहा है, this is the imaginary part, अभी जो आपको लग रहा है this is the imaginary part, right? That's what it looks like, and this looks like the real part. Why? Because यहाँ पे आयोटा नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन रियल पार्ट तो उसने कहा होना ही नहीं चाहिए, वहां पे रियल पार्ट तो आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, now the first thing that you might think of, like Fazain is suggesting here, you are saying q should be equal to p square. Why? You're basically saying कि अच्छा q minus p square equals 0, आप ये कर दें, right? That's what you're thinking, right? इसको आप 0 के इक्वल कर दें, क्यों? ताकि ये रियल पार्ट खत्म ही हो जाए, है ना? तो आपके पास आ जाए q equals p square। अच्छा, if we were to do that, आपके पास a और b पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये पार्ट 0 हो गया, पॉइंट क्या रह गया, p आयोटा। सिर्फ पॉइंट आपके पास सिर्फ p आयोटा रह गया। अगर ये पार्ट को 0 कर दें, अगर इसको 0 कर दें, पॉइंट क्या रह गया आपके पास, सिर्फ p आयोटा, दैट्स जस्ट वन पॉइंट। और उसने आपको क्या कहा है यहाँ पे, उसने कहा है a and b are represented by two distinct points. That means this doesn't work. इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों p आयोटा हो जाएंगे, they are supposed to be distinct points। ठीक है, अच्छा, so this doesn't work. What we can do, however, is we can say ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव हो जाए स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट, तो क्या होगा, ये भी आयोटा की टर्म्स में आ जाएगा, right? So if I had something like the square root of something negative -3, ये मेरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और वो मैं p आयोटा में ऐड करूंगा, I'll only have terms in iota, सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स होंगी, right? So what we want to do is we want this part inside the square root, we want this less than 0. Why do we want that? Because this will make square root of q minus p square
imaginary as well. ये भी इसका imaginary बना देगा, iota की terms में इसको कर देगा, and that's what we want, right? तो आप क्या कहोगे? You'll say q minus p square should be less than 0, and that gives you q less than p square. You can leave it like this if you want. That's a relationship between p and q. इस तरह भी छोड़ सकते हैं, or you can write it like this: q should be less than p square, right? I think this was probably the hardest part in this paper. Complex numbers में कभी-कभी इस तरह का होता है कि थोड़ा सा standard question से हट जाता है. Then you have to think very carefully there, right? So this is what we get in this case. ठीक है? So q is less than p square. That's the relationship that we've got. Let's look at the next part. It says given instead that triangle OAB is equilateral, express q in terms of p. अच्छा, it says given instead. इसका मतलब है जो पिछले पार्ट में इंफॉर्मेशन दी थी ना उसने कि a and b lie on imaginary axis, that's no longer relevant. अब ये different situation. OAB is an equilateral triangle. अच्छा, let's try to represent that here. हम दोबारा से वो points mark कर लेते हैं. एक point हमने क्या लिखा हुआ था? A was p plus square root of q minus p square. This was one point, and the other point was p iota minus square root of q minus p square. ठीक है? अच्छा. Now let's represent them on an argand diagram. O तो आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा, right? That's the origin. So O is here. Points A or B. Now it really depends on the values of P and Q. के P और Q positive है, negative है. हमें तो ये पता ही नहीं है कहीं पे कि वो positive है, negative है. We don't know that stuff here. तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको मार्क कर लेते हैं कहीं पे. हमें रियल पार्ट का पता है कि एक रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक रियल पार्ट नेगेटिव है. तो हम उनको इस तरह से मार्क कर लेते हैं. लेट्स से एक पॉइंट कहीं पे इधर आ जाए, हो सकता है. एक पॉइंट कहीं पे हो सकता है यहाँ पर आ जाए. राइट, दैट्स जस्ट अ गेस, बट वी डोंट रियली नीड एग्जैक्ट पॉइंट्स. हम इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं. नाउ दिस इज सपोज्ड टू बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी, हम कह रहे हैं ये इक्विलैटरल होनी चाहिए. तो थोड़ा सा इक्विलैटरल इसको बनाने की कोशिश करते हैं. इसको हम थोड़ा सा पास ले आते हैं. So this is A here and this is B. This is the triangle that we've got. ठीक है. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? All the lengths are equal. All the lengths are equal. यानी कि OA should be equal to OB and that should be equal to AB. ये तीनों लेंथ्स इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? आप यहाँ पे लिख लें. कोऑर्डिनेट्स तीनों के आपके ओरिजिन तो 0 0 है, राइट? दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस इज 0 0. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अगर आप एक्सिस के हिसाब से देखें, दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? रियल पार्ट इसका क्या है? रियल पार्ट यानी एक्स एक्सिस वाला पार्ट यहाँ पे क्या बन रहा है? एक्स एक्सिस वाला पार्ट मेरे पास बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ q minus p square. That's the part in the x axis. वर्टिकल पार्ट क्या बन रहा है? वर्टिकल पार्ट मेरे पास बन रहा है p, right? Because that's the imaginary term. ये वर्टिकल पार्ट बन रहा है. What about b? अच्छा, इसको उल्टा होना चाहिए था. नेगेटिव b है तो लेफ्ट वाला एक्चुअली b होना चाहिए था. इसको मैं b कर देता हूँ. राइट वाले को a होना चाहिए था. लेफ्ट वाले को हम b कर देते हैं. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव q माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड देन p. और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस p स्क्वायर एंड p. ठीक है. आर्गुमेंट पाई ओवर 3 होगा. यस, एक आर्गुमेंट पाई ओवर 3 होना चाहिए, बट दैट्स अ बिट हार्ड टू प्रूव एक्चुअली. बट यस, दैट विल बी द केस. लेकिन उसकी रीजनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. It's simpler to just equate their lengths. OA OB को equate अगर करेंगे, let's try that. So that's the first thing that you can do. OA और OB को equate कर दें. Let's see what we get from that. OA और OB को equate करते हैं. उससे हमारे पास क्या आता है? OA और OB को equate करने से we get remember आपने मॉडुलस फाइंड करना है दोनों का मॉडुलस, राइट? रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया. दैट्स गोइंग टू बी q माइनस p स्क्वायर का स्क्वायर रूट. इसको स्क्वायर किया प्लस
imaginary part ka square, that's p square, and then square root of that, and that equals real part ka square again, q minus p square का square root और इसका whole square. अब यहाँ पे बाहर negative लगा हुआ है, but that is not going to make any difference because the square ही हो रहा है. ये पूरा square हो गया plus p square. ये हमने दोनों के ऊपर दोनों का मॉडुलस फाइंड कर लिया, उनको इक्वेट कर दिया ओ ए और ओबी को. ठीक है. अच्छा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, q minus p square plus p square and that equals q minus p square plus p square. ये आपके पास आ जाएगा, everything cancels out, you get 0 equals 0. So that doesn't help. इससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, right? Because वो दोनों के मैग्नीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम ही आ रहे हैं, मतलब सेम टर्म्स में आ रहे हैं, वो सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 equals 0 आ गया, q और p में कोई रिलेशनशिप आपको नहीं मिला. So OA equals OB is not helping, right? This is not helpful. So what do we do then? हम AB को यूज करें, हमें AB को यूज करना पड़ेगा, right? So OA OB के साथ किसी भी एक के साथ आप AB को यूज करें. Let's try that. This is not helping, right? Because 0 equals 0 आ गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ. हम ये कर सकते हैं, OA और AB को इक्वेट कर दें अगर. Can we do that? AB भी आपके इक्वल लेंथ होनी चाहिए ना. AB का डिस्टेंस कैसे आएगा? Again, you can apply the distance formula here. Distance formula कैसे apply करेंगे? x2 minus x1 का whole square, right? So let's call this x1 और इसको x2 कह देते हैं, इसको y2 कह देते हैं, इसको हम यहाँ पे x1 कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं. Just apply the distance formula. Distance formula apply कर दें and see what you get. Square root of x2 minus x1, so that's going to be square root of q minus p square का square root minus square root of q minus p square का square root, and then whole square of this. This is x2 minus x1 का whole square, right? That's what I've done here. Plus y2, what's y2? That's p minus y1, that's also p का whole square, and then you got square root on top of that. Square root cancel हो गए दोनों sides के ऊपर. What am I left with? q minus p square plus p square. देखें ये अंदर भी मेरे पास ये स्क्वायर रूट था ना, और ये स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गए. So this square and this square root get cancelled, और ये जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है और जो राइट साइड वाला स्क्वायर रूट है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए. स्क्वायर रूट्स को एलिमिनेट कर दिया, लेफ्ट साइड पे ये आ गया, राइट साइड पे क्या आ गया? Let's have a look at this. We've got inside the brackets square root of q minus p square minus and minus, this becomes plus 2 into square root of q minus p square, and then you've got whole square of that plus ये तो 0 हो गया, वो खत्म हो गया. ठीक है, let's simplify this. ये p square cancel हो गया, we're left with q equals I think 2 कहाँ से आ गया? This should have been just this plus square root of q minus p square, and now when we add both of them we get 2 into square root of q minus p square. ठीक है, दोनों को ऐड किया, ये 2 times वो हो गया, and we got a square outside. अब स्क्वायर कर दें इसको, what does that give us? q equals 2 का square is 4 into q minus p square. Let's simplify this. It gives us q equals 4q minus 4p square. आपने क्या करना है? q in terms of p करना है, q को subject बना ले. So I can take q on the right side. I have 3q equals 4p square, and then q equals 4p square over 3. That's the relationship between q and p here. ठीक है, distances को हमने equal कर दिया, हमके coordinates को देखकर distances equate कर दिया, and that's what we end up with. All right, again, quite complicated this part, right? So I would do these 2 parts. First part to khair aasan hai. These 2 parts I would definitely do at the end of the exam, right? So इसको आप बिल्कुल end के लिए छोड़ेंगे, ठीक है? इसको बिल्कुल भी आप दरम्यान में नहीं लेकर बैठेंगे.
इस तरह के क्वेश्चन में, बिकॉज इफ यू गेट स्टक यू लूज अ लॉट ऑफ टाइम, और फिर आपके आगे वाले आसान क्वेश्चन भी जो है वो आपसे गलत होते जाएंगे. सो व्हेनेवर यू गेट समथिंग लाइक दिस, जो आपको नहीं समझ आ रहा कुछ देर में 2-3 मिनट में नहीं समझ आ रहा, मूव ऑन, कम बैक टू दैट लेटर ऑन व्हेन यू डन विद द रेस्ट ऑफ द एग्जाम. ठीक है, इसलिए इट एक्चुअली हेल्प्स टू टेक द फर्स्ट 2 minutes इन द एग्जाम टू स्किम थ्रू द होल पेपर, और उसमें से देख लें कि अच्छा आसान क्वेश्चन आगे, अगर आसान वाले क्वेश्चन मार्क कर लें ताकि आपको पता हो कि आगे ये आसान क्वेश्चन आ रहे हैं. आई कांट अफोर्ड to waste a lot of time on these difficult questions and then end up missing those easier questions. तो easier question में आंसर पहले मार्क्स आपने पहले जो है वो सिक्योर करने हैं, उसके बाद फिर आप इस तरह की प्रॉब्लम पे वापस आएंगे अगर आप स्टक हो जाते हैं. ठीक है, of course if you are able to do them, you can still do them, but don't spend a lot of time in the middle of the exam on this. Xenia, you should never leave out the question completely. If you do, you still have a chance of getting an A. That's true. Paper 3 का आपका जो threshold होता है, that's relatively lower. कोविड में वैसे ही थोड़ा ज्यादा लो हो चुका हुआ है. अब खैर शायद 55 के आसपास होगा normally. But you should never leave the question. Do something. कुछ आप 2-3 आपको जो लग रहा है स्टेप्स कुछ शो करके आ जाएं, मेथड के मार्क्स आपको मिल जाते हैं. पहले 1-2 मार्क्स जो होते हैं ना मेथड के, वो बहुत उसने लीनियंट रखे होते हैं. तो अगर आप कुछ भी करेंगे हो सकता है आपको 1 मार्क मेथड का वैसे मिल जाए, राइट? सो इफ यू हैव एटलीस्ट सम आइडिया, जस्ट पुट दैट ऑन पेपर, you'll get some partial marks, right? So don't leave it blank. End पे आपके पास टाइम होगा, उसके अंदर just try to do something. Hopefully it will get you at least some partial marks. Okay. Okay, so I'm posting a playlist here. It has some quick revision videos on P3 integration, complex numbers, and vectors. They should be very helpful. इस playlist पे 3 videos हैं, integration, complex numbers, and vectors. They should be very helpful for last minute revision. And of course, if you haven't covered the topic yet, at least you would know कि कौन-कौन सी चीजें आपको definitely इसमें cover करनी है. वो सारे different concepts आपके पास इसमें, learn them in 40 to 50 minutes. You'll not learn them, but you'll at least go through them quickly. If you've already done them, it will be a good revision. If you haven't already done them, you'll get an idea कि ये चीजें आपने भी cover करनी है. So make sure that you go through that if you still are not very comfortable with these topics. Let's do this question number 6. Let's resume now. The parametric equations of a curve are x equals ln of 2 plus 3t and y equals t over 2 plus 3t. Now it says show that the gradient of the curve is always positive. अच्छा, सबसे पहले तो gradient find करना पड़ेगा. Gradient क्या होता है? Gradient is the derivative of a function. तो इसका derivative निकाल लेते हैं. Parametric equations में क्या करते हैं? You differentiate both the equations separately. You say dx over dt that equals, इसको differentiate करें, ठीक है? तो log का derivative क्या होता है? 1 over whatever is inside. It's going to be 1 over 2 plus 3t. And then you multiply by the derivative of what is inside the log, inside the brackets. इसका derivative क्या होगा 2 plus 3t का? That's going to be 3. So you multiply with that. So this turns out to be 3 over 2 plus 3 times t. Okay. Now let's look at this other one. dy over dt. This is a fraction. इस पे आपको quotient rule लगाना पड़ेगा. So remember the quotient rule. If you've got to find the derivative of u over v, इसका derivative क्या होता है? V square in the denominator, and the numerator you've got vu dash minus uv dash. अब सब वो यूज कर रहे हैं, denominator को square कर देंगे. We get 2 plus 3t whole square. In the numerator we have 2 plus 3t as it is first, multiplied by the derivative of the numerator. t का derivative क्या होगा? It's going to be 1. Subtract from this u as it is, यानी कि numerator as it is, t as it is आ जाएगा, into the derivative of the denominator. 2 plus 3t का derivative क्या हो जाएगा? That's going to be 3. And now you simplify this, you get 2 plus 3t
minus 3t divided by 2 plus 3t whole square, and that gives you 2 over 2 plus 3t का whole square. This is your dy over dt. ठीक है, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स आ गए. व्हाट एम आई डूइंग? 2 over 2 plus 3t whole square, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स आ गए आपके पास. Now you'll just apply the chain rule and find dy over dx from this. So let's find dy over dx. That's what we're looking for. Gradient चाहिए आपको. dy over dx होएगा. dy over dx is dy over dt, right, multiplied by dt over dx. ये आपका चेन रूल हो गया. Let's just input values. dy over dt क्या है? dy over dt is 3 over 2 plus 3 times t. Okay, 3 over 2 plus 3 times t. ये आपके पास dy over dt आ गया. Multiplied by dt over, I'm sorry about that, this is not correct. मैंने dx over dt लगते हैं यहाँ पे गलती से. This should have been 2 over 2 plus 3t whole square, that's dy over dt, multiplied by dt over dx, यानी कि इसका reciprocal करना पड़ेगा. That's going to be 2 plus 3t divided by 3. ठीक है. What do we get from this? 2 over 3, that's what you got from these two. Square ये cancel हो गया एक इसके साथ. What are we left with? We have 2 over 3 और denominator में हमारे पास आ रहा है 2 plus 3t. This is what we got. This is dy over dx. We need to show that this thing is always positive. We need to show that this thing is always positive. How can we do this? Generally जब हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे वहां पे क्या होता था, कोई स्क्वायर आ रहा होता था या कोई e की पावर आ रही होती थी, उसका हमें पता होता है वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, या e की पावर या किसी कांस्टेंट की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है. What about this now? You're saying time is never negative. Where are we given that t is time? इसने कहाँ पे कहा t time को represent कर रहा है? That's an assumption. Who said t is time here? अब देखिए t की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है वैसे तो, राइट. t की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे t की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो ये तो पूरा का पूरा आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना. t के पूरा डेरिवेटिव आपके पूरा डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है t के ऊपर. Look at the equations that are given. Do you have any restriction on t looking? Do you think there's going to be any restriction on t looking at these equations? क्या t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है? Yes. So basically log के अंदर आपके पास आ रहा है 2 plus 3t. जो log के अंदर चीज आ रही होती है वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. So this thing, according to the question, this thing has to be positive. 2 plus 3t जो है ये यहाँ पे greater than 0 होना चाहिए. 2 plus 3t cannot be negative. So since 2 plus 3t cannot be negative, we can write that here. 2 plus 3t अगर हमेशा positive होएगा, that implies कि 2 over 3 into 2 plus 3t, that is also going to be positive, right? You can write the reason for this. ये क्यों positive है? Because we cannot have negative number inside the log. इसलिए ये चीज तो नेगेटिव हो नहीं सकती है. It has to be greater than 0. If this has to be greater than 0, that means ये तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है. 2 और 3 तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं. This has to be greater than 0. So that's why this is greater than 0. ठीक है. Yes, Fazan, you can also do that. You can say 3t is greater than minus 2. 3t is greater than minus 2. उसका भी मतलब यही होएगा कि ये जो
आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव आपके पास एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। Zina, if you were to expand that, that's not a problem. That's still going to be correct. 2/6 plus 90, वो भी आपके derivative तो ठीक है, but it will be harder to think of why this should be positive then, because 2 plus 3t तो exactly आपके पास log में आ रहा था ना यहाँ पे, इसलिए हमने उससे compare कर लिया। अगर उसको expand कर देंगे, you might not be able to figure that out, वो आप शायद miss कर दो, but उसको expand करके लिखने में मसला कोई नहीं है वैसे, you can do that. All right, any problems with this? इसमें आपको ये प्रॉपर्ली, इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन राइट, तो इसमें इतनी कोई ज्यादा वर्किंग तो नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन आपने जो एंड पे रीजनिंग लिखनी है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। 2 plus 3t greater than 0 आपने क्यों कहा है, क्योंकि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, यू शुड राइट दैट एंड देन यू कैन से दैट्स द रीजन कि आपका dy over dx जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन. Now it says find the equation of the tangent to the curve at the point where it intersects the y-axis. Y-axis को intersect कर रही है जहां पे curve, वहां पे tangent निकाल लें. अब tangent is a straight line. Tangent is a straight line. Straight line के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको equation निकालने के लिए? You need a point and you need the gradient. ये दो चीजें चाहिए हमें. एक point चाहिए, gradient चाहिए. Now what are x and y? उसने क्या ऊपर दिया हुआ है? X is equal to ln of 2 plus 3t. And y is 1 t over t 2 plus 3t. ये हमारे पास x और y है. Now, since we are looking for the tangent at the point where it intersects the y-axis को जहाँ पे intersect करेगा वहां पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. हम x की वैल्यू 0 इनपुट कर देंगे, वहां से हमें क्या मिलेगा? t मिल जाएगा, क्योंकि किस t की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे. So we have 0 here, ln of 2 plus 3t. ln की बेस e होती है, e goes to the other side, becomes the base of 0. It becomes e raised to power 0 equals 2 plus 3t. 1 equals 2 plus 3t. t equals 1 over 3. तो बेसिकली ये t की वैल्यू है, इस t की वैल्यू के ऊपर आपको फाइंड करना है -1 over 3. yes, so it's supposed to be -1 over 3. इस t की वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना है? एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है. ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं. x का इनफैक्ट आपको पता है, x तो 0 है, यू नो दैट. y निकाल लें, ये t इसमें इनपुट कर दें, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y क्या हो जाएगी? -1 over 3 divided by 2 plus 3 into -1 over 3, and you can see what that turns out to be, -1 over 3 और नीचे आ जाएगा 1. so yeah, so that's going to be -1 over 3. y भी आपके पास आ रहा है -1 over 3. so you've got the point now. point क्या हो गया आपके पास? the point that you have is 0 and -1 over 3. ये point आ गया. दूसरी चीज क्या चाहिए हमें? gradient चाहिए. gradient हमने डेरिवेटिव फाइंड किया पिछले पार्ट के अंदर. dy over dx equals this. y पॉजिटिव है? y पॉजिटिव है? Are you sure about it? t over 2 plus 3t नेगेटिव नहीं आता? y की वैल्यू -1 over 3 नहीं आती? Can somebody check this? It's -1 over 3. It should be -1 over 3. नहीं, देखिए नीचे डिनोमिनेटर ये होगा ना, -1 over 3. डिनोमिनेटर में you've got 2 minus 1. Right, so it becomes -1 over 3. Okay, अच्छा. So you've got the point 0 and -1 over 3. Now you need the gradient. Gradient आपके पास dy over dx है यहाँ पे, उसमें वैल्यू इनपुट कर दें t की. Let's do that here as well. dy over dx, that is कहाँ गया? 2 over 3 into 2 plus 3t. That was dy over dx. इसमें t की वैल्यू इनपुट कर दें. You input
t equals -1/3 in this. When you input that, that's going to give you 2/3 into 2 plus 3 into -1/3. That's going to be 2 minus 1. Gradient आपके पास आ गया 2/3. This is your gradient. You've got the point, you've got the gradient. आप इक्वेशन लिख दें, उसने कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं मांगी आपसे, आप बस डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर डाल दें, उसको वैसे ही छोड़ दें बस. y minus y1 equals m into x minus x1. y minus -1/3, so it becomes y plus 1/3. इनफैक्ट ये y इंटरसेप्ट ही आपको दिया हुआ है, तो y equals mx plus c भी लगा सकते हैं यहाँ पे. Just think about it. y इंटरसेप्ट था ये, या y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, so we could actually just use y equals mx plus c if we wanted, वो भी यूज कर सकते थे. But anyway, I've got 2/3 into x minus 0. ये आपके पास इक्वेशन आ गई. You can leave it like that if you want, or you can say this is y equals 2/3x minus 1/3. That's the equation that you were looking for. ठीक है, ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली. Any issues with this? Let's move on. Okay, let's move on to the next one. Question number 7. We've got the diagram that shows the curve y equals tan inverse of x divided by square root of x and its maximum point m where x equals a. इसका maximum point given है. Show that a satisfies this equation. Okay, maximum point यानी turning point find करना है. Turning point हम कैसे find करते हैं? We find the derivative, we put the derivative equal to 0, and that's what we're going to do here. Derivative find कर लेंगे इसका और उसको 0 से equate कर देंगे. Right? So yes, it's इसके सेकंड पार्ट में आइटरेशन आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जिसने ए सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो वो उससे लिए बनवाता है, मतलब एक साइड पे लेके गया हुआ है, उसमें आइटरेशन आ जाएगी फिर आगे. एनीवे, लेट्स ट्राई दिस. मैक्सिमम पॉइंट कैसे आएगा? डिफरेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे. वी गॉट y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x. ठीक है, कोशेंट रूल लगा देंगे डिफरेंशिएट करने के लिए. डिनोमिनेटर का स्क्वायर, so that's x, square root of x plus square is x. In the numerator, you've got square root of x as it is. Derivative of tan inverse of x. What's that? Tan inverse of x का derivative क्या होता था? 1/1 plus x square. Right? Formula sheet में लिखा होता है, in case you forget. Minus numerator as it is, tan inverse of x as it is, into derivative of the denominator, square root of x का derivative. So this is basically x raised to power 1/2. उसका derivative क्या आएगा? 1/2 into x raised to power minus 1/2. ये आपका उसका derivative आ गया. ठीक है. Now what we do is we put this equal to 0. 0 से equate कर दिया. जब 0 से equate करेंगे तो क्या होएगा? ये x जाके वहां पे 0 हो जाएगा. ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इनटू, आई कैन से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 plus x square minus हाफ, और वो स्क्वायर रूट पे नीचे रह जाते हैं. हाँ, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में 1/2 ये है, x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 को मैं डिनोमिनेटर में ले गया और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ x. दिस इज द इक्वेशन दैट आई एंड अप गेटिंग. ये डिनोमिनेटर वाला x मैंने क्या किया, राइट लेफ्ट साइड पे जाएगा. ये 0 हो गया था ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा. ठीक है, दैट मेक्स सेंस. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और इनफैक्ट वी जस्ट नीड टू रीअरेंज दिस. सॉल्व नहीं करना, उसको रीअरेंज करना है और ये फॉर्म लेकर आना. ठीक है. अच्छा, वहां पे यहाँ पे tan इनवर्स आ रहे हैं हमारे पास, ऊपर tan आ रहा है, तो हमें पहले तो उसको क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. This becomes tan inverse of x into 1/2 square root of x. On the other side, I've got square root of x over 1 plus x square. Tan inverse of x को सब्जेक्ट बना ले, तो इसको जाके मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड के ऊपर. What does that give us? That gives us tan inverse of x equals 2x over 1 plus x square.
ठीक है, अब क्योंकि वहां पे tan चाहिए था आपको, tan इनवर्स जो है दूसरे साइड पे जाके tan बन जाएगा, एंड दैट गिव्स यू x equals tan of this whole thing 2x over 1 plus x square. ठीक है, but that's not enough. उसने जो आपको कहा है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो एक ही टर्म्स में दी हुई है, राइट? वो एक ही टर्म्स में दी हुई है। आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना था, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया। अब वो स्टेशनरी पॉइंट को उसने क्या दिया हुआ है, उसने क्या कहा हुआ है, स्टेशनरी पॉइंट को उसने कहा हुआ है x equals a। तो यहाँ पे जाके आप इनपुट करोगे, विल से put x equals a. When you do that, you get your final result from that. That's a equals tan of 2a over 1 plus a square. तो इसको a की टर्म्स में एंड पे लिखना है, ठीक है? That's your final result. ये आपने प्रूव करना था वहां पे। All right. So a satisfies this equation. Now let's look at the next part. It says verify by calculation that a lies between 1.3 and 1.5. अब iteration के दो स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं। क्या करना है वेरिफिकेशन में, हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, f of x equals 0, यानी कि सब कुछ एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर 0, राइट? सो उसको रीअरेंज कर लेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, विल से दिस इज a minus tan of 2a over 1 plus a square that equals 0. अब इस जो लेफ्ट साइड पे चीज है इसको हम कह देते हैं f of x। हमें क्या करना है, f of 1.3 इवैल्यूएट करना है और हमें f of 1.5 इवैल्यूएट करना है। You don't have to write this necessarily, कैलकुलेटर पे इवैल्यूएट कर लें, देख लें आपके पास क्या आता है। One should be positive and the other should be negative, right? Yes, of course, Fazan. अच्छा, 1.3 इनपुट कर दें, 1.3 minus tan of इसको रीअरेंज किया ना जो ऊपर लिखा हुआ था, एक साइड पे 0 चाहिए था मुझे और दूसरी साइड के ऊपर बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये फॉर्म चाहिए होती है ना। तो we need everything on one side and on the other side we got 0, ठीक है? इस फॉर्म में करेंगे, उसके बाद आप ये रूल अप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। 1.3 इनपुट कर दें, 1.3 minus tan of remember we are again talking about radians, integration, iteration, differentiation, हर चीज में आपने radians यूज करने होते हैं, do not use degrees. We've discussed the reasoning for that multiple times before. So it becomes 2 into tan of 2 into 1.3 divided by 1 plus 1.3 का square. अच्छा, I have evaluated this. I'm getting minus 0.148. Can somebody confirm this as well? यही आता है, minus 0.148. That's what I'm getting. That's the first one, minus 0.148. This is negative. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसने कहा हुआ है 1.5. Let's input that. 1.5 इनपुट कर दें। अब पहले जो आपने इनपुट किया उसमें सिर्फ एडिट करना है, दोबारा से पूरा लिखने नहीं बैठ जाना। That gives me 0.178. This is positive. यहां तक मैं जितना काम किया है, this is going to get me 1 mark. Okay, it's only going to get me 1 mark. अब यहाँ पे लिखेंगे, since the sign changes, or you can say since f of 1.3 and f of 1.5 have different signs, या आप ये कह सकते हैं कि उससे उस पर साइन चेंज हो रहा है। Since they have different signs, a root lies, या a root को उसने a कहा हुआ है, कहते हैं a lies between 1.3 and 1.5. एक मार्क ये लिखने का होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे you'll only get 1 mark for writing down these values. Okay, that's important. Let's look at the next one. Use an iterative formula based on the equation in part A to determine A correct to 2 decimal places. Give
the result of each iteration to 4 decimal places. Okay, now this is the result of the first part. एक वेरिएबल आपका एक साइड के ऊपर है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड के ऊपर है. इसका इटरेटिव फॉर्मूला कैसे बनाते थे? Let me write down that formula here again. That equation here again, a equals tan of 2a divided by 1 plus a square. ठीक है, this was the formula. This was the equation. अब क्या करोगे? लेफ्ट साइड के ऊपर n plus 1 लगा दोगे, राइट साइड पे n लगा दोगे. दिस इज द आइटरेटिव फॉर्मूला. ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब हमने इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करनी है. अब क्या इनपुट करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू वैल्यूज. 1.3 और 1.4 के 1.5 के दरमियान वाला वैल्यू ले लें. दैट्स गोइंग टू बी a1. a1 इज 1.4. ठीक है, 1.4 से स्टार्ट किया. यस, and now you find out a2, a3 and a4 and so on. वो सारे आप evaluate करेंगे. कैसे करेंगे? आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे? you'll input 1.4, या बटन प्रेस करेंगे and then you'll put the answer button, press the answer button, और फिर आप ये पूरा फॉर्मूला कैलकुलेटर में डाल देंगे. क्या इस तरह से? tan of 2 into answer divided by 1 plus answer square. ये आप कैलकुलेटर में डालेंगे और उसको evaluate करते जाएंगे बार बार. ठीक है, what does a2 turn out to be? Let's figure that out. इसको बेहतर होता है कि आप एक आइटरेशन में इनपुट करके यहाँ पे दिखा दें, although it's not necessary. Tan of 2 into 1.4 divided by 1 plus 1.4 का square, and that's going to give you a value. अब ये कैलकुलेटर पे करना है, आपने मैनुअली नहीं करना बार बार. आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1.4 इनपुट करें कैलकुलेटर में, press the answer button, and then type this formula, tan of 2 times answer divided by 1 plus answer का square. इस पूरे का tan किया. Now a2, the first iteration, this turns out to be 1.386468 and so on. ये मेरे पास आ रही है. आपने राउंड ऑफ बहुत केयरफुली करना है, फजूल में एक बार कट जाएगा. अदरवाइज उसने क्या, गिव ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस. अब इसको 4 डेसिमल प्लेस पे आप ये नहीं करेंगे कि आप 3864 लिख दें सर. दैट्स गोइंग टू मेक यू लूज 1 मार्क. लास्ट डिजिट आपने राउंड ऑफ करके लिखना है. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी 3865. ठीक है, लास्ट डिजिट राउंड ऑफ करके लिखेंगे 3865. दैट्स व्हाट यू गेट. ठीक है, और एग्जैक्टली 4 डेसिमल प्लेस होने चाहिए. ज्यादा होंगे या कम होंगे आपका मार्क कट जाएगा. And now you just keep pressing the equal sign, और देखिए नेक्स्ट क्या आता है. Next I'm getting 1.3951 to 4 decimal places. A4 1.3896. A5 1.3931. We are fairly stable now. आपको आंसर जो चाहिए, आंसर आपको चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक. तो आप देखें आपके सारे डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सारे आंसर अभी तक क्या आ रहे हैं? 1.39, 1.3. अच्छा नहीं, ये नहीं आ रहा. सो अभी 2 ये सिर्फ आइटरेशन. इनफैक्ट पहला 1.39 आ रहा था, ये 1.40 बन रहा है. दिस इज 1.39, दिस इज 1.39. 2 कंसेक्यूटिव स्टेबल आ गई हैं, बट यू शुड वेरीफाई यूजिंग 1 मोर. A6 भी इवैल्यूएट कर ले. नेक्स्ट मेरे पास आता है 1.3909. जब 3 कंसेक्यूटिव आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम आ जाए, देन दैट्स इनफ. इन तीनों का आपके पास 3 डेसिमल प्लेस तक सेम रिजल्ट आ रहा है, 1.39, 1.39, 1.39. You stop at that point and you say the final answer should be A equals 1.39 to 2 decimal places. आंसर उसने कहा था 2 decimal places तक, तो आपने वो 2 decimals तक आपने आंसर दे देना. ठीक है, if you want you can keep going on, और आप चारों स्टेबल होने का वेट कर लो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है. आपने बस 2 decimal places जब राउंड ऑफ करके आपके पास सेम रिजल्ट आ जाए for 3 consecutive iterations, you can stop at that point. आपको आगे करने की जरूरत नहीं होती है, बट कर भी देंगे तो मसला नहीं है उसके अंदर. ठीक है, that's your final result, 1.39. Okay, let's move on to the next one.
With respect to the origin O, the points A and B have position vectors given by OA equals 1, 2, 1 and OB equals 3, 1, -2. ये दो position vectors हैं आपके पास, OA and OB. Now, the line L has equation R equals 2, 3, 1 plus lambda into 1 minus 2, 1. Line L की equation है. Find the acute angle between the directions of AB and L. अच्छा, L की direction क्या है? This is the direction vector. ठीक है? L की direction तो ये आ गई. What about AB? आपको AB find करना पड़ेगा. So that's how we start. Let's find AB. AB vector क्या होगा? AB vector is going to be OB minus OA. ठीक है, यहाँ पे evaluate कर लें. OB minus OA, so that's 3 minus 1. That gives me 2. 1 minus 2, that's -1. -2 minus 1, that's going to be -3. ये मेरे पास AB vector आ गया. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या थी? डायरेक्शन ऑफ L, that is 1 -2 1. ये आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइन. इन दोनों के दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है. एक्यूट एंगल चाहिए आपको. ठीक है, तो अगर ऑब्ट्यूज आ रहा होगा तो 180 में से माइनस कर देंगे, आपके पास एक्यूट एंगल आ जाए. ठीक है. Now, what's the formula that we got for this? Angle का हमारे पास एक ही formula होता है vectors के अंदर. You are given that in the formula sheet as well. If you want to refer to that, ये आपके पास formula दिया होता है. Yeah, this one. Yes, it's right here. ये उसने इस तरह से दिया हुआ. A dot B equals modulus of A into modulus of B into cos theta. इसको rearrange करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं. A dot B over modulus of A into modulus of B क्योंकि आपको cos, आपको angle find करना. ठीक है. You can just use this formula, find the angle that you need. Now, how do you do that? Cos theta equals A dot B divided by modulus of A into modulus of B. अच्छा, formula apply करने से पहले इनको आप अलग से evaluate कर लें. It's going to be easier that way. को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा. एक तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए. इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे साइड पे कर लें. 2 minus 1 minus 3 dot product that with 1 minus 2 and 1. ठीक है. corresponding terms को multiply कर दें. 2 into 1 corresponding components को multiply कर दें, उनको add कर दें. फिर -1 into -2 plus -3 into 1. What does that give us? 2 plus 2 minus 3, that should be 1, right? Dot product आपके पास 1 आ गया. न्यूमरेटर तो हमारे पास 1 हो गया. ठीक है. अब दोनों के मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी आप अलग से फाइंड कर लें. वहीं पे AB का मैग्नीट्यूड निकाल लें. ये क्या होएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. नेगेटिव साइन डालें ना डालें एक ही बात है, स्क्वायर ही कर देना आपने उसको. What do we get from this? 4 plus 1, that's 5. 5 plus 9 is square root of 14. ये square root of 14 आ गया. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जो दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड square root of 1 square plus 2 square plus 1 square. That's giving me square root of 6. ये आपको सबसे कुछ चाहिए, फॉर्मूला में इनपुट कर दें. square root of 14 है नीचे और square root of 6 है. cos theta equals this. Find cos inverse of this. We'll get the angle. ठीक है. इसको बेशक आप डेसिमल्स में लिखते हैं पहले, if you want. डेसिमल्स में लिखते हैं if you want. 1 divided by square root of 14 divided by square root of 6, and that gives me 0.1091. अब इसका cos inverse कर लें. Keep in mind we are dealing with अच्छा, आप खैर एक ही बात है, आप रेडियंस में दे लें या डिग्रीज में दे लें, दोनों में दे सकते हैं. उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई. यहाँ पे दोनों यूज कर सकते हैं आप. I'll use degrees. Cos inverse of 0.1091. I'm getting 83.7 degrees. This is the angle that we needed. अगर हमारे पास obtuse angle आ जाता तो हम इसको 180 में से माइनस कर देते. We would have gotten this acute angle from that. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम समीर. That's good to know, Fazan. Finally.
Question number 8, part A, that's what we have to do here. Okay, let's look at part B. Find the position vector of the point P on L such that AP equals BP. Okay, so there's some point P on the line L. There's some point P on the line L, and it's such that the distance AP and the distance BP, they are equal. Now let's try to understand this situation. Just for context, अगर आपके पास ये line है, let's call this L. हमारे पास एक पॉइंट P है कहीं पे जो लाइन के ऊपर लाई कर, ठीक है. दो पॉइंट्स A और B हैं कहीं पे, maybe A is somewhere here, B is somewhere here. इन दोनों का डिस्टेंस P से सेम है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है P से. That's what we're given. Now we've got to find the position vector of this point P. इस P का position vector find करना है given this information. अच्छा, अब देखिए P पॉइंट लाइन L के ऊपर लाई करता है. P पॉइंट लाइन L के ऊपर लाई करता है. लाइन L की इक्वेशन क्या है? This is the equation of the line L. R equals 231 plus lambda into 1 minus 2 1. Yes, that's correct. दोनों का magnitude same होगा. But how are we going to use this? हमें P का position vector नहीं पता. हमें A का position vector पता है. We have to write that down. We know OA is equal to 1 to 1. So we know what position vector of A. We know OB. वो भी हमें पता है. That is 3 1 minus 2. We know both of them. But we do not know OP. OP नहीं पता हमें. अब OP के लिए क्या कर सकते हैं? Since this is a point that lies on the line. लाइन के ऊपर लाई करता है ना. लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 231 plus lambda into 1 minus 2 1. Okay. Now since P lies on this line, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी फॉर्म के हैं. तो हम OP अगर लिखेंगे तो वो भी इसी फॉर्म का आएगा. We can say OP vector is basically 2 plus lambda. इसको इकट्ठा लिख दें, इसको कंबाइन कर दें, ऐड कर दें. 2 plus lambda, 3 minus 2 lambda, 1 plus lambda. Basically इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसी फॉर्म के हैं. That's what the equation represents, that every point in the line is of this form. P is on that line, तो वो भी इसी फॉर्म का होगा. The only problem is we don't know what the value of lambda is. Lambda की वैल्यू में फिगर आउट करनी है. जब lambda की वैल्यू आ जाएगी, that we can write down the position vector of P. ठीक है, तो अभी lambda की टर्म्स में हमारे पास ये position vector of P बन रहा है. And now what we can do is, since we are given that their lengths are equal, हम उनको equate कर देते हैं. AP और BP को की lengths को equate कर दें. ठीक है. Now, what we can do for that is we can first find these two vectors, AP or BP. Okay, that's going to become easier. AP find कर लें. AP क्या होएगा? It's going to be OP minus OA. Let's evaluate that. OP minus OA. 2 plus lambda में से 1 minus किया. What do we get? 1 plus lambda. 2 plus lambda minus 1, 1 plus lambda आ गया. 3 minus 2 lambda minus 2. That's going to be 1 minus 2 lambda. 1 plus lambda minus 1, that is lambda. If you fear you are going to make a sign error here, इसको यहाँ पे लिख के कर लें. ठीक है, इसको जरूरी नहीं है आपने मेंटली करना है, तो लिख के कर लें ताकि साइन एरर्स नहीं हो रहे हो. BP, what's that? That's OP minus OB. Again, इस वेक्टर में से आपने OB माइनस कर देना. Let's do that. 2 plus lambda minus 3. 2 में से 3 minus किया, क्या आ गया? minus 1. So it's going to be minus 1 plus lambda. 3 minus 2 lambda minus 1. 3 minus 1 is 2. So that's 2 minus 2 lambda. 1 plus lambda minus minus 2. 1 minus minus 2, that becomes 1 plus 2. That's 3 plus lambda. ये आपके पास आ गए BP और AP. ठीक है, अब क्या करेंगे? इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर देंगे. Let's say the magnitude of AP
should be equal to the magnitude of BP because इनके लेंथ इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए. लेट्स डू दैट. स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे आ रहा है, उसका आप बेशक ना भी लगाएं, एक ही बात है. 1 plus lambda whole square plus 1 minus 2 lambda whole square plus lambda square, right? आपके पास फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का? सारे कंपोनेंट्स को स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB. व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ BP? दैट्स -1 plus lambda whole squared plus 2 minus 2 lambda whole squared plus 3 plus lambda whole square. We got an equation जिसमें सिर्फ lambda है. आप lambda की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे यहाँ से. स्क्वायर रूट रिमूव हो गया. 1 plus lambda whole square, that's 1 plus 2 lambda plus lambda square. 1 minus 2 lambda का whole square, that's 1 minus 2 into 2 lambda, that's minus 4 lambda. 2 lambda का whole square, that is going to be 4 lambda square. Okay? Plus lambda square. इसमें careless errors बहुत ज़्यादा होते हैं. A lot of people end up making a sign error here और end पे result सही नहीं आता. अच्छा, second value of AP minus 2 lambda AP. अच्छा, AP हमारे पास किधर आ रहा है? OP minus OA, that's 3 minus 2 lambda minus 2. Are you talking about this one? This is 1 minus 2 lambda. Is that incorrect? थ्री में से 2 माइनस करेंगे ना, so we still have 1 there. 1 minus 2 lambda होगा ना, 1 तो खत्म नहीं हुआ वहां से. I think that's correct. Yeah. Okay. Acha. So we on the left side you got this. What about the right side now? Minus 1 plus lambda का whole square. It's going to be 1. Minus 1 का square 1 हो गया. Minus 2 into lambda plus lambda square. And then 2 squared, that's 4. Minus 2 into 2 into 2 lambda, that's 8 lambda plus 4 lambda square. And then you got another square to evaluate. देखिए इतने सारे squares हैं, it's extremely likely कि यहाँ पे कोई ना कोई careless error होगा. तो please be careful when you're working on this. फजूल में marks lose नहीं करें. कुछ seconds आपके extra लग जाएंगे, that's okay. But if you know how to do something, you should make sure that you get full marks on that. ये आपके पास आ गया. ठीक है. Now let's simplify both sides. Left side में मेरे पास कुछ constants है. कौन से constants? I've got 1 here and another 1 here. इनको add करके लिख लेता हूँ. 2 आ गया. 2 lambda minus 4 lambda and that's it. That's going to give me minus 2 lambda. Lambda square वाली terms, lambda square, 4 lambda square and lambda square, that gives me 6 lambda square. What about the right side? I've got 1, 4 and 9. That adds up to 14. 2 lambda minus 8 lambda, that's minus 10 lambda plus 6 lambda, that is going to be minus 4 lambda. Okay. Then I have lambda square, 4 lambda square and lambda square, that gives me plus 6 lambda square. Lambda square cancel हो गया. 6 lambda square, 6 lambda square. And we're left with 2 lambda equals 12, lambda equals 6. Lambda की वैल्यू आ गई. अब आपको पता है पोजीशन वेक्टर इस फॉर्म का था, उसके अंदर इनपुट कर दें जाके. OP आपके पास आ जाएगा. OP वेक्टर is 2 plus lambda, so that's 2 plus 6. 3 minus 2 lambda, so यहाँ पे इसको देख रहा हूँ मैं. 3 minus 2 lambda, that is 3 minus 2 times 6, and then 1 plus 6. That gives me the position vector of P, which is 8. 3 minus 12 is minus 9. And 1 plus 6 is 7. This is the position vector of P, OP. Yeah, मैं figure out करना था. All right, any problems with this? Any problems with this? उसने कोई specific form नहीं मांगी, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो. कभी-कभी वो कहते हैं IJ के फॉर्म में लिखें. अगर उस फॉर्म में लिखना होता, it would have been 8I minus 9J plus 7K. लेकिन उसने कहा नहीं है यहाँ पे either
one of them is going to be okay. ठीक है? All right, so that's your vectors question. Question number 8. Let's move on to the next one. Acha. The equation of a curve is y equals x raised to the power minus 2 over 3 into ln x for x greater than 0. The curve has one stationary point. इसने आपको बता दिया. Find the exact coordinates of the stationary point. Stationary point find करने क्या करेंगे? Derivative निकालेंगे, 0 से equate कर देंगे. Looks pretty straightforward. dy over dx equals, now it's a product rule लगाना पड़ेगा. Remember, uv dash plus vu dash, you have to use that. The first one is u here, this is v. U as it is, x raised to the power minus 2 over 3 into derivative of v, ln x का derivative क्या होता है? 1 over x plus derivative of u, x raised to the power minus 2 over 3 का derivative, that's going to be minus 2 over 3 into x power minus 2 over 3 minus 1, that's x raised to the power minus 5 over 3, and then ln x as it is. Okay, this is the derivative. Now what we do is, since we're looking for the stationary point, we put this derivative equal to 0. Okay, now this is x raised to the power minus 2 over 3, this is x in the denominator, that becomes x raised to the power minus 2 over 3 minus 1, which is x raised to the power minus 5 over 3. And then I have minus 2 over 3 into x raised to the power minus 5 over 3 into log of x. Okay, now I can take x raised to the power minus 5 over 3 common there. And that gives me 1 minus 2 over 3 log of x equals 0. Now I've got two factors, इनका product जो है वो 0 के equal है. That means either x raised to the power minus 5 over 3 equals 0 or 1 minus 2 over 3 ln x equals 0. First one से मेरे पास value आ गई x equals 0. दूसरे से मेरे पास क्या आ गया? 2 over 3 into ln x, that equals 1, and that becomes ln x equals 3 over 2. ln की base e है, that will go to the other side, becomes the base of 3 over 2, and that gives me x equals e raised to the power 3 over 2, or you can say 1.5. ये evaluate कर लें. Do we need exact answer? अच्छा, exact आपको चाहिए. So this is the exact value. ये मुझे मेरे पास मिल रही है. x equals e raised to the power 3 over 2. और दूसरा point मुझे मिल रहा है x equals 0. Now, you were given the curve has one stationary point. You are getting 2, right? आपको s0 भी मिल रहा है और आपको x equals e raised to the power 3 over 2 भी मिल रहा है. That means one of them is most likely going to be invalid. So we have to check कि अच्छा कौन सा जो है वो नहीं possible. अगर x 0 हो जाए, if you look at the equation, अगर x की value 0 input कर दें, log के अंदर 0 आ जाएगा. And the function is going to become undefined. So we say this is not possible. x0 नहीं हो सकता. Right? So this is not possible. अच्छा, उसने क्वेश्चन में बताया भी हुआ है. उसने क्वेश्चन में बताया भी हुआ x is greater than 0. उसने आपको बताया हुआ है इनफैक्ट. So उससे भी पता चल रहा है x is greater than 0. Right? वैसे भी अगर आपको ना भी दिया होता, you know कि log के अंदर 0 नहीं इनपुट कर सकते, उसकी वजह से भी आपको कंसिडर नहीं करोगे. So we've got only one value of x. उसने कहा था find the exact coordinates of the stationary point. x coordinate आ गया, आपको y coordinate भी चाहिए. So this is the value of x that we're getting. X equals e raised to the power 3 over 2. इसको अब equation के अंदर input कर दें. Equation क्या थी? y equals x raised to the power minus 2 over 3 into ln of x. इसके अंदर input कर दें. We input x equals e raised to the power 3 over 2 in this. Let's see what that gives us. That gives us y equals e raised to the power 3 over 2 whole raised to the power minus 2 over 3 and then log of e raised to the power 3 over 2. अच्छा, ये powers ये तो cancel हो गई, ये और ये -1 रह गया सर. So it becomes e raised to the power -1. log के साथ क्या करें? ये power को बाहर लग सकते हैं लाके. So it becomes 3 over 2 and then ln e तो 1 होता है. We can write this as
3/2 e raised to power -1 है, उसको नीचे जाके लिखते हैं, that's 3/2e. ये आपके पास y आ गया. So what's the point now? The point is e raised to power 2/3 and no sorry 3/2. तो में एक मार्क कट जाना था यहाँ पे, e raised to power 3/2 and then 3/2e. That's your final result. ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए थे, you just leave it in this form, decimals में नहीं कन्वर्ट करेंगे. Okay, let's move on. Part B of this, show that integral of y dx equals 18 ln 2 minus 9. अच्छा, y क्या है यहाँ पे, y ऊपर दिया हुआ था उसने, it was x raised to power -2/3 into ln x. Let's write that on the side. The function was y equals x raised to power -2/3 into log of x. ठीक है, अच्छा, let's write that down. X raised to power -2/3 into log of x dx. ये आपने evaluate करना है, लिमिट्स को भी भूल जाएं, बाद में एंड पे जाके डाल देंगे. इट्स अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते. प्रोडक्ट्स में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं. वी आइदर यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और वी यूज सब्स्टिट्यूशन. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो वो क्वेश्चन में हमेशा बताता है, राइट? सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्वेश्चन में हमेशा बताएगा सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है. उसने यहाँ पे नहीं बताया होगा. सो द ओनली ऑप्शन दैट यू गॉट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. वही आपके पास ऑप्शन है, इसके अंदर इंटीग्रेशन में पार्ट्स करनी है, वो आप अप्लाई कर दोगे इसके ऊपर. नाउ यू गॉट द फॉर्मूला गिवन इन द फॉर्मूला शीट. आप इसको, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टू हैव इट इन फ्रंट. अच्छा, why is it pixelated? अच्छा, I'll just write that down. So formula आपके पास ये होता है, integral of u dv/dx with respect to x, that is equal to uv minus integral of v du/dx with respect to x. Right, that's the integral. Okay, yeah. अच्छा, अब क्या करें, हमें डिसाइड करना है किसको u लेना है, किसको dv/dx लेना है. इसके लिए क्या थंब यूज करते थे हम कहते थे we'll use 𝗨8. We of course know the reasoning for that, लेकिन हम एग्जाम में सिर्फ क्या करेंगे, इसको फॉलो कर लिया करेंगे. 𝗨8. Now what types of functions do we have here? Algebraic, ये आपका algebraic function है, and we've got logarithmic, ये आपका logarithmic function है. जो लेफ्ट पे आ रहा होगा वो u होगा, जो राइट पे आ रहा होगा वो dv/dx होगा. ठीक है, लेफ्ट पे कौन सा आ रहा है, लेफ्ट पे आपके पास log आ रहा है, उसको हम u ले लेंगे, और राइट पे क्या आ रहा है अलजेब्रिक, उसको हम dv/dx ले लेंगे. द रीजन हियर इज लॉग का हमें इंटीग्रल नहीं पता ना, लॉग का इंटीग्रल नहीं पता. तो लॉग का इंटीग्रल क्यों नहीं पता, इस वजह से हम लॉग को dv/dx नहीं ले सकते. राइट, दैट्स द रीजन. बट यू कैन जस्ट यूज दिस. I represents inverse trigonometric. I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, इसका मतलब हुआ करेगा tan इनवर्स. ठीक है, अच्छा, तो हमने डिसाइड कर लिया हमने किसको u लेना है, हमने इसको u लेना है. हम यहाँ पे लिख लेंगे अब, दैट्स गोइंग टू बी इजियर. अगर आप एक साइड पे लिख लें, इसको इवैल्यूएट अलग से कर लें. u इक्वल्स x रेज़ टू पावर -2/3 dv/dx इक्वल्स, सॉरी द अदर वे अराउंड, सॉरी अबाउट दैट. हमने u किसको लिया, log को. u इक्वल्स ln x and dv/dx equals x raised to power -2/3. If u is ln x, what about du/dx? That's going to be 1/x. If dv/dx is x raised to power -2/3, v क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, that's going to be x raised to power -2/3 plus 1. 1/3 1 ऐड करेंगे, बस क्या आ जाएगा 1/3 divide by that increased power. 1/3 से divide कर दिया, v turns out to be 3x raised to power 1/3. ये आपके पास सब कुछ आ गया. Now you just have to input values in the formula. That's all you have to do. Formula क्या था, uv minus integral of v du
over dx, इसके अंदर इनपुट कर दें वैल्यूज। u is ln x, so we input ln x, v is 3x raised to power 1 over 3 minus integral of v, again v is 3x raised to power 1 over 3 into du over dx. What's du over dx? That is 1 over x. And now we need to integrate this thing. अब बाहर तो हमारे पास आ गया 3x raised to power 1 over 3 into log of x. Now we need to integrate this thing 3x raised to power 1 over 3 minus 1. That's going to be minus 2 over 3. अब इसको integrate करना है. This is a simple integration. क्या करेंगे? Power को increase कर देंगे by 1. Simple power rule apply कर देंगे. 3 as it is. X की power increase कर दी by 1. It becomes 1 over 3. And then divide by that increased power. 1 over 3 से divide कर दिया. And that gives you 3x raised to power 1 over 3 minus 9x raised to power 1 over 3. That's the integral. Integral निकाल लिया. Plus ये इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमें limits input करनी है. अब यहाँ पे जाके limits लगा दें जो आपने input करनी है. क्या limits हैं? 1 से लेकर 8 तक. Now keep in mind you need an exact answer. Decimals में नहीं convert करना. ठीक है? Exact answer चाहिए. तो एक दफा 8 input कर दें, एक दफा 1 input कर दें. You have 3 into 8 raised to power 1 over 3 minus 9 into 8 raised to power 1 over 3. Subtract from that the case when you've got 1, 3 into 1, power जो मर्जी हो, doesn't matter. In this case, 9 into 1. Let's evaluate this. There's something wrong here. I missed the log. Yeah, so log miss कर दिया. Log हमने वहाँ पे miss कर दिया. So let me add some space here. अच्छा, इसके बाद log भी था ln of x. So this is going to be ln of 8 here, and this is going to be ln of 1 here. ठीक है, ये evaluate कर लें. Log के terms में रखना है. 3 into 8 raised to power 1 over 3. 8 raised to power 1 over 3 तो 2 होता है. So 3 into 2 is going to give you 6. 6 ln 8 minus 9 into 2, that's going to be 18. Minus 3 into ln 1, ln 1 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा. Minus 9. ठीक है? That gives us 6 ln 8 minus 18 plus 9. That's going to be 6 ln 8 minus 9. Now what did we need here? 18 ln 2 minus 9. तो minus 9 तो ठीक है, लेकिन आपको चाहिए 18 into ln 2. हमारे पास आ रहा है ln 8. ln 2 में convert करना है. What we can do is we can write it as 2 का cube. So that's going to be 6 ln 2 cube minus 9. Showing the step is going to be necessary. इसके बाद डायरेक्टली नहीं कर देना कि अच्छा आपने अज्यूम कर लिया कि ये 2 क्यूब है, क्यूब बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आप सीधा आंसर लिख दो कि अच्छा दिस सपोज टू बी 18 ln 2 minus 9. उसने आंसर बताया हुआ है आपको हर स्टेप बहुत क्लियरली शो करना है. You'll have to show here कि किस तरह से ये उसमें जाएगा. This step is going to be absolutely important. So it's going to be 6 ln 2 cube minus 9, and then you say 6 times 3, that becomes 18 ln 2 minus 9. That's what we wanted to show. Okay? हो गया? That's the integration. Now let's move on to the last question. उसके बाद हमारे पास क्या है? Okay, so we again have integration. Differential equation है. So हमने एक integration का ये question किया. That was 5 marks. एक दफा पहले भी आया था मुझे लगता है कहीं पे integration. No? Yeah, so 4 marks here. 9. Yeah, so 9, and then the last question is of 11 marks. Wow, so that's 20 marks. 20 marks on integration. पेपर में आपके 20 मार्क्स इंटीग्रेशन के. अच्छा खैर इसमें आपके पार्शियल फ्रैक्शंस भी आ गए तो 5 मार्क्स ठीक है पार्शियल फ्रैक्शंस के हो जाएंगे. सो एटलीस्ट 15 मार्क्स ऑफ इंटीग्रेशन. दैट्स अ लॉट. अच्छा, इसने क्या कहा है? द वेरिएबल्स x and t satisfy the differential equation
dx over dt equals this and x equals 1 when t equals 0. उसने एक पॉइंट दिया हुआ है आपको. हाँ, but it's 11 marks. That looks hard. लेकिन partial fractions है ना, partial fractions जब इसके साथ ही आ जाता है तो उसके मार्क्स ज्यादा ही होते हैं, because 4-5 मार्क्स तो partial fraction में मिल जाते हैं आपको, right? But it doesn't look very difficult actually. Let's try this. ये differential equation है. इसने कहा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसने हिंट दे दी आपको, उसने आप पे एहसान किया. अगर वो नहीं भी दिया होता आप फिर भी कर सकते थे इसको, बट इसने आपको बता दिया, तो नाउ यू नो कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने हैं. ठीक है, लेकिन इस हिंट के बगैर भी आपको करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़ेंगी. ओके, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन obtaining expression for t in terms of x. Keep this in mind, t सब्जेक्ट होना चाहिए n के ऊपर, in terms of x. That's important. ओके, नाउ सबसे पहली चीज क्या करनी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए? यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, dx लेफ्ट पे हो जाएगा, dt राइट पे चला जाएगा, x वाली टर्म्स उठा के लेफ्ट पे लेकर आ जाएंगे. सो इट बिकम्स 1 over x square into 1 plus 2x. On the right side we've got dt. Now we've separated the variables. Variables separate हो गए हैं. अब क्या करें? Now we can integrate both sides. Right side पे कुछ भी नहीं है, we can assume it's 1, right? And now we integrate it. ठीक है, अच्छा, ये सेपरेशन का एक मार्क आपको फ्री में मिल जाता है. राइट साइड को इंटीग्रेट कर दें, उसका एक मार्क आपको दोबारा फ्री मिल गया. 1 का इंटीग्रल क्या है? t, that's t plus c. You get 2 marks until this point, right? 2 मार्क्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे सिर्फ इतना करने पे. Now we need to integrate this thing on the left side. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें? उसने आपको हिंट दे दिया, उसने कहा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने हैं. अगर उसने हिंट ना दी होती तो क्या करते? अगर उसने हिंट ना दी होती क्या करते? You would think about how we can integrate fractions. Fractions को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है? या तो log लग सकता है, log अप्लाई होता है यहाँ पे, नहीं होता डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में नहीं है, हम log नहीं यूज कर सकते. tan इनवर्स वाली फॉर्म है या नहीं है? उसमें tan इनवर्स में आपको 1 plus x square ये वाली फॉर्म चाहिए होती है डिनोमिनेटर में. That doesn't work. If both of them don't work, the third option that we have is partial fractions. तो हम खुद से भी फिगर आउट कर सकते थे कि हमें partial fractions यहाँ पे करना पड़ेगा. So now leaving it at this point, इसको मैं अभी erase कर देता हूँ. Let's do partial fractions first, उसके बाद वापस इंटीग्रेशन पे आते हैं. Partial fractions कर लेते हैं इस चीज के अलग से. 1 over x square into 1 plus 2x. What is going to be the form for this? एक तो हमें पता है ये proper है, right? So that's obvious. इसकी form क्या होगी? We've got a repeated linear factor and then one other linear factor. इसकी form होगी a over x and then b over x square and then you've got c over 1 plus 2x. इस तरह भी लिख सकते हैं. इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है, आप इसको क्वाड्रेटिक भी अज्यूम कर सकते हो. You could say that's ax plus b over x square and then c over 1 plus 2x. Both are okay. इसमें दोनों acceptable होती हैं. ठीक है, दोनों कर सकते हैं. अच्छा, so let's do it this way. क्या करेंगे? ये जो लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर होगा उसको राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर दें. इस पूरे डिनोमिनेटर को राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड के ऊपर, तो क्या हो गया? वी हैव 1 ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड x, इस एक x से कैंसिल हो जाएगा. व्हाट आर वी लेफ्ट विद? a into x into 1 plus 2x. ठीक है, दूसरी टर्म में x स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा. ये वाला x स्क्वायर, क्या बचा हमारे पास? 1 plus 2x. थर्ड टर्म में 1 plus 2x पूरा कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा? x स्क्वायर. So we got plus c x square. ठीक है, आप इस तरह सोच सकते हैं. आपने लेफ्ट साइड को, forget about LCM, lot of people get confused with that. आप क्या कर दें, बस लेफ्ट साइड पर जो डिनोमिनेटर है उसको जाके मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म के साथ. That's what we get. ठीक है, okay. Now we can input some specific values to make each bracket 0 one by one. तो क्या कर सकते हैं? We could start by taking x equals 0. x की वैल्यू 0 इनपुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी. Let's start from that. Let's input x equals 0. Remember it's an identity, right? ये दोनों sides identical हैं, तो हम x की जो मर्जी वैल्यू चाहे इनपुट कर सकते हैं. 0 इनपुट करने का क्या फायदा होगा? कुछ टर्म 0 हो जाएंगी, हमारे पास क्या बचा? 1 equals
0 because of this. Second term is going to be b into 1 plus 0. The third term is also 0. b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 आ गई, ठीक है। अच्छा, what else can we input here? We can make this bracket 0, 1 plus 2x plus 0 बनाएंगे, 1 plus 2x equals 0. That gives us x equals minus 1 over 2. x equals minus 1 over 2 input करेंगे तो ये bracket 0 हो जाएगी. Let's do that. x equals minus 1 over 2. We get 1 equals 0. Okay, ये term 0 हो गई, ये term भी 0 हो जाएगी, plus 0 plus c into minus 1 over 2 whole squared. What does that give us? That gives us 1 over 4 times c equals 1 and c equals 4 from that. c की value आ गई. We've got the value of b and c. अब a रह गया. Now there's no bracket left जिसको हम 0 कर सकते हैं. हमने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया. अब क्या करें? कोई भी और x की वैल्यू डाल दें, आसान सी वैल्यू, और a और b उसके साथ b और c की वैल्यूज पे डाल दें. So we can say x equals 1 डाल दें. x equals 1 के साथ you can also input the values of b and c now. b equals 1 and c equals 4. ये भी डाल दें. Okay, what happens when we do that? इसके अंदर डाल रहे हैं ओरिजिनल जो आपके पास इक्वेशन आइडेंटिटी बनी थी वहां पे. 1 equals a into 1 into 1 plus 2 into 1 plus b is 1 into 1 plus 2 into 1 plus c was 4 into 1 का स्क्वायर. ठीक है, अब 1 यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है हर जगह पे, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, that's okay. 1 equals 1 into 1 plus 2, that's 3. It's going to be 3 times a. 1 into 1 plus 2, again, it's going to be 3 plus 4. What does that give us? That gives us 3a equals minus 6. a की वैल्यू हमारे पास आ गई minus 2. So we found the partial fractions. आपके वो इंटेग्रल अब क्या बन गया, हम यहाँ पे नीचे लग देते हैं. We now have on the left side we have a over x, that's minus 2 over x, plus b over x square, that's going to be 1 over x square, plus c, that is 4 over 1 plus 2x. इस पूरे को हमने इंटीग्रेट करना, ठीक है. अब इसके इंटीग्रेशन पहले अलग से कर लेते हैं हम. We can integrate each term separately. तो वो कर लें. minus 2 over x को अलग से इंटीग्रेट कर लें, 1 over x square को अलग से इंटीग्रेट कर लें, और 4 over 1 plus 2x को अलग से इंटीग्रेट कर लें. Now how do you integrate each of them? अच्छा, फर्स्ट वन, इसका लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो. x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आप इसको 2 को बाहर लिख लो, minus 2 को बाहर लिख लो, you get 1 over x inside. इसको आप लॉग में कन्वर्ट कर लोगे. What about this 1 over x square? इसको कैसे इंटीग्रेट करें? ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म होगी? Think about it. Log, tan inverse, something else. What is this going to be? Tan inverse. Tan inverse में क्या चाहिए होता है डिनोमिनेटर में? 1 plus x square. Do we have that? We don't have that. इसको आप क्या कर सकते हो? You can actually write it as x raised to power minus 2. इसको ऊपर लें. That's P1 integration. नीचे वाले 2 को ऊपर लें. Log भी नहीं है, tan inverse भी नहीं है, उसको ऊपर आके पावर बना दें. Okay. The last one, can we use log here? Again, 1 plus 2x का डेरिवेटिव क्या है? 2. ऊपर 2 रख लें, एक 2 को बाहर ले जाए, 4 को आप डिवाइड कर लें 2 और 2 के अंदर, एक 2 अपने बाहर लिख दिया, एक 2 अंदर लिख दिया. This is now the log form. What's the integral of this now? Minus 2 ln x plus x raised to power minus 1 over minus 1 plus 2 into ln of 1 plus 2x. ये आपके पास उसकी इंटीग्रेशन आ गई. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. minus 2 ln x minus 1 over x plus 2 ln 1 plus 2x. ये आपने इंटीग्रेट कर लिया इस लेफ्ट साइड को.
इस इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड को, ये आपने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम दोबारा से लिख लेता हूँ ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या थी? इट वाज इंटीग्रल ऑफ 1 over x square into 1 plus 2x, इसका इंटीग्रेट करना था लेफ्ट साइड के ऊपर। On the right side we had 1 dt. That was the differential equation. Let's go back to that now. Integration left side की क्या आ गई? minus 2 ln x minus 1 over x plus 2 ln of 1 plus 2x. On the right side we've got 1 dt. So that's going to be t. Equation is sorry. t plus c. That's the equation. Okay? ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करें? अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब c की वैल्यू कैसे आएगी? उसने पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है when x equals 1 t equals 0। पॉइंट पुट कर दें, x equals 1 and t equals 0. What does that give us now? Minus 2 ln 1 minus 1 over 1 plus 2 ln of 1 plus 2 equals 0 plus c. c क्या आ गया? माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 minus 1 plus 2 ln 3, that's the value of c. c is 2 ln 3 minus 1. तब वो इक्वेशन क्या बन गई? ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई minus 2 ln x minus 1 over x plus 2 ln 1 plus 2x equals t plus 2 ln 3 minus 1. That's what I'm getting. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब so this will most likely get you 10 out of 11 marks. यहाँ तक आपके 10 out of 11 marks जब आपने, क्योंकि this is the solution of the differential equation. ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन कह सकते हो, ठीक है। अब उसने इसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। इन मोस्ट केसेस इसका 1 मार्क होता है एंड के ऊपर, ठीक है। कभी कभी ये ज्यादा ट्रिकी भी हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन दरम्यान में कहीं पे आ जाए, ये पार्ट आप एंड वाला बेशक छोड़ दें, एंड पे उसको बिल्कुल पेपर पे एंड पे करें, क्योंकि 1 मार्क होता है एंड जनरली इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। सो आप इसको एंड के लिए छोड़ दिया करें। बट नाउ इट्स ऑलरेडी द लास्ट क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। हमें क्या करना है? हमने t in terms of x करना, ओके। t in terms of x, t को सब्जेक्ट बनाना है। हाउ कैन वी मेक t द सब्जेक्ट हियर? t वाले टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो मसला नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अक्सर वो मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। t है ही सिर्फ इस टर्म के अंदर, और कहीं पे t है ही नहीं। सो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी t इक्वल्स, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा, या नो, सो वी हैव t इक्वल्स 1 minus 2 ln 3, इस टर्म को लेफ्ट पे लाया, and then minus 2 ln x minus 1 over x plus 2 ln of 1 plus 2x, ठीक है। अच्छा, इसमें तो आप सब्जेक्ट बनाने में कोई मसला नहीं था, एक ही टर्म थी t वाली, उसको आपने उधर ले गए, and that should be your final result. Okay, now let me just check this. Minus 1 over x plus 1. अच्छा, so I'm just checking in the marking scheme. इसमें जो form दी हुई है वहाँ पे, that has 2 outside common. That is okay. Inside we've got 1 plus 2x divided by 3x. Yeah, so that's fine. So this is fine. This is fine. ये आपका, this is correct answer. Generally, they prefer in the marking scheme कि आप log वाले टर्म को इकट्ठा कर दो, log वाले सारे logs को इकट्ठा लिख दो, right? So we can do that if we want. आप वो कर सकते हैं। You can say 1 minus 1 over x, log टर्म्स को इकट्ठा अगर कर लें, इन सब में 2 आ रहा है, एक तो 2 को आप कॉमन ले सकते हो, so you have 2 common, and inside you have ln of 1 plus 2x minus
ln of 3 minus ln of x, ये आप कर सकते हैं 2 कॉमन लेकर, and then you can make it one single log. किस तरह से? Using the multiplication law and the division law. You can say this is ln of 1 plus 2x in the numerator. ये माइनस हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये भी माइनस हो रहा है, ये x पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So you could write it like this as well. लेकिन यहाँ पे उसने आपको कहा नहीं है कुछ करने को. You could leave it in that form as well. उसमें मसला नहीं है. But it's preferred, the examiner prefers that you convert it to a single log at the end. Right? So मार्क्स में उसने हमेशा इस तरह से लिखा होता है. लेकिन आपने उसने specify नहीं किया था, तो you don't necessarily have to do it. Okay, so that was paper 3. This was November 21, paper 3, variant 1. Sorry, this was not November, this was June 2021, paper 3, variant 1. We're done with this. So yes, you're right. पूरे paper के अंदर जो मुश्किल question था, that was only the complex one, right? The rest of the questions were fairly standard. बहुत कोई नई चीज नहीं थी. Maybe this part, जो gradient always positive वाला इसके last में उसको argue करना कि वो क्यों positive है, that was maybe slightly tricky. But complex numbers wala part was generally tricky. Apart from that, it was not a very difficult paper. Okay, but this had the lowest threshold across the 3 components in this session. Okay.